I requested the extra player of AS Strikers to please report to the stage to tell the player's name immediately. धन्यवाद सतीश। तो इस तरह मैच शुरू होने जा रहा है। मैच नंबर 11 इस श्रृंखला का एएस स्ट्राइकर्स और शेटी वॉरियर्स के बीच में। एएस स्ट्राइकर्स जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता स्टंप्स को कवर करते हुए, लेकिन गेंद को ठीक तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए और गेंद वहीं पर गिर गई। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं। राम गणेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार है और यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए जितेश इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए और सुकेश नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और गेंदबाज राम गणेश यह गेंद लेकर तैयार। इस वक्त रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त और रन्स का जहां तक सवाल है तो रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाज राम गणेश कर चुके हैं अपने गेंदबाजी के जरिए और जो कि 3 बेहतर गेंदें वो इस वक्त फेंक चुके हैं बल्लेबाज जितेश के लिए। और कुल मिलाकर इस पावर प्ले ओवर्स में एक बेहतर गेंदबाजी अपने पहले ओवर में अब तक वो कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एब्सोल्युटली टेरिफिक वन। आई थिंक इज गॉट आउटसाइड ऑन दैट, आउटसाइड निक ऑन दैट। इन फैक्ट जिस तरीके से उच्च उत्तेजना के साथ गेंदबाज ने छलांग लगाई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद गेंद और बल्ले का कोई संपर्क वहां पर हुआ होगा। तो यहां पर इस गेंद को लपक नहीं पाए विकेट कीपर और एक डॉट गेंद और उनके खाते में जुड़ता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार राम गणेश जितेश के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शफल होते हुए गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतर गेंदबाजी, 5 डॉट गेंदे यहां पर फेंक चुके हैं। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में इस वक्त कर चुके हैं राम गणेश और इस ओवर में अंतिम बार तैयार जितेश के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का तो जितेश इस वक्त सामना करते हुए मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा सीधे इस वक्त तैनात किया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। और राम गणेश ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और इसी के साथ मेडन ओवर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट इन बॉलिंग फ्रॉम राम गणेश और मेडन ओवर के जरिए वो एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में दे चुके हैं शेट्टी वॉरियर्स के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एएस स्ट्राइकर्स अभी भी अपना खाता नहीं खोला है और जहां तक सवाल है स्कोरबोर्ड इस वक्त रुक चुका है 0 पर और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर का खेल अब बाकी उनकी पारी में और एक लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई शेट्टी वॉरियर्स के गेंदबाजों के शेट्टी वॉरियर्स के फील्डरों के बीच में कि अगली गेंदबाजी किसको सौंपा जाए। और इस वक्त काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा यहां पर सौंपा जा रहा है मल्लेश के हाथों में और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार सुकेश। तो दूसरा ओवर इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स की पारी में यहां पर शुरू होता हुआ तो निस्संदेह घने अंधेरे को चीरकर फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान पर गिर रही है और इस मैदान को झगमगाती हुई और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला केवीसी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और मैच नंबर 11 इस श्रृंखला का यहां पर शुरू हो चुका है। पहली गेंद लेकर मल्लेश इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, बेहतरीन ऑफ कटर गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट उछालना चाहा, गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार एक बार फिर से डॉट गेंद, बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग लेकिन यहां पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। 8 लगातार गेंद डॉट गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज शेट्टी वॉरियर्स के। और निस्संदेह जो उम्मीद अपेक्षा शेट्टी वॉरियर्स के कप्तान ने की थी
गेंदबाजी की शुरुआत के बारे में उस उम्मीद अपेक्षा को काफी हद तक साकार कर चुके हैं अब तक के दो गेंदबाज। ये गेंद फ्लाइटेड, इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, लेकिन रक्षणा मौजूद एंड एट लास्ट दे गॉट द रन फ्रॉम द बैट। और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, और मलेश इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार जितेश के लिए। और एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार फ्लाइटेड, उछाला मिड विकेट पर, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और काफी पीछे तैनात एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और एक रन के साथ इस बीच जितेश भी अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। गेंद को उछाला था काफी ऊंचा, लेकिन फील्डर जो खड़े हुए थे डीप मिड विकेट पर काफी पीछे, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, हालांकि रनअप में कुछ हद तक बाधा इस वक्त गेंदबाज के लिए, और अपने गेंदबाजी के मार्ग पर वापिस वो लौटते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फ्लाइटेड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज एन ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर। गेंद को उछालना चाहा था, गेंद जैसे ही बल्ले को वंचित करते हुए विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे और विकेट कीपर ने तेजी के साथ गिल्लियां बिल्स उड़ा दी और बल्लेबाज का बैकफुट जो क्रीज से कुछ इंच बाहर था, और इस वजह से इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। पहला विकेट गिर चुका है 2 रनों के ऊपर, और स्ट्रगलिंग पारी, स्ट्रगलिंग इनिंग्स जिसे कहते हैं, इस वक्त समाप्त हो चुकी है सुकेश की। और पहला विकेट यहां पर खो चुका है एएस स्ट्राइकर्स 2 रनों के ऊपर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो नए बल्लेबाज राघवेंद्र, तो राघवेंद्र का जहां तक सवाल है, द मैन इन फॉर्म, और पिछले मैच में एक ऐसी यादगार पारी उन्होंने खेली थी जो एएस स्ट्राइकर्स इस श्रृंखला में याद रखेगा। तो यहां पर 44 रन पिछले मैच में बनाए थे सिर्फ 16 गेंदों पर, अभिजीत 6 छक्कों की मदद से। अब इस बार देखते हैं इस मैच में वो क्या करते हैं। पहली गेंद इस बार चिप किया, लॉन्ग ऑफ पर इनफील्ड क्लियर करते हुए, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। गेंद को उछाला था इस वक्त राघवेंद्र ने, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडली गेट, लेकिन गेंद इनफील्ड क्लियर कर चुकी थी इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 4 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एएस स्ट्राइकर्स का, तो इस वक्त राघवेंद्र की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है, और पिछले मैच में जिस तरीके की विध्वंसक बल्लेबाजी उन्होंने की थी, उसी तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी की इस वक्त उम्मीद है उनके टीम को उनसे। और देखना यह है कि वे अपनी टीम के उम्मीदों को किस हद तक साकार करते हैं इस मैच में। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, जो तो अगला ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ प्रदीप गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और गेंदबाज प्रदीप और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज जितेश। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और प्रदीप फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, विकेट कीपर भी इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और सब होने के बाद इस वक्त गेंदबाज प्रदीप अपनी नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जितेश इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। न सिर्फ इस वक्त साझेदारी की जरूरत है ये स्ट्राइकर्स को, बल्कि एक तेज साझेदारी की सख्त जरूरत, क्योंकि 2 ओवर उनके पारी के बीत चुके हैं, सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी। और यहां पर देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी दिखाते हैं, और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल 6 रनों के लिए। जितेश काफी देर से
गेंद पर अपना लय प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। इस बार शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद के उछाल को पहचानते हुए गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से भेज दिया छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। तो ऐसे चंद और करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत है एएस स्ट्राइकर्स को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो अब ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रेट अवे दबाव गेंदबाज के ऊपर और देखना यह है कि गेंदबाज प्रदीप अपने अगली गेंद पर कौन सा रणतंत्र यहां पर अपनाते हैं गेंदबाजी में। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद पटके हुई गेंद, एक बार फिर से उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 के रूप में और 22 के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. And now the man who played a memorable knock in the previous match scored 44 runs, unbeaten runs, 44 unbeaten runs in just 16 deliveries. He is now back on strike. राघवेंद्र इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तक गेंदबाजी करते हुए राघवेंद्र के लिए फुल टॉस गेंद, गेंद को हल्के से बल्ले तक आने दिया, गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, गेंद के लाइन पर बल्ले को लाते हुए और गेंद को जब तक वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर फील्ड कर रहे, बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पटके भी गेंद ऑन साइड पर उछाला मिड विकेट पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक में इतना दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर तैनात थे उन्होंने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। जितेश की पारी समाप्त, 13 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस फॉर एएस स्ट्राइकर्स। So Pradyumna, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for AS strikers और वो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार राघवेंद्र और प्रदीप इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ द टोज गेंद को खेलना चाहा, गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया इस वक्त गेंदबाज ने और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गेंदबाज के, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उन्होंने गेंद को फेंकी थी और इस गेंद पर बल्लेबाज को कोई रन यहां पर नहीं मिला और एक बार फिर से प्रदीप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए राघवेंद्र के लिए पटकी हुई गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद थी, गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंदबाजी और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। So after 3 overs, still the batsmen of AS Strikers are now searching for the right track. 13 runs they scored with the average of exactly 4.33 runs per over. 13 रन सिर्फ 3 ओवर के समाप्ति के बाद जोड़ चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज AS Strikers के 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में अपने सही लय, अपने टीम को सही पटरी पर लाने के लिए कौन सी रणनीति बल्लेबाजी पर अपनाते हैं क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आगे का आंखों देखा हाल सुनाने को सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So far it's a domination continues here from the bowlers of Shetty Warriors. The 3 overs they bowled really very well. They're able to pick the wickets, 2 wickets, and at the same time they put some break on the run rate of AS Strikers. So, but nothing much worry about that run rate because the batter are in the middle is none other than the previous match hero Raghavendra is in non-strikers end, and Pradyumna, one more fantastic all-rounder for the side of AS Strikers, are in the middle and having both
accomplished batsmen are in the middle. I think yes, because definitely they're looking for some acceleration in the remaining overs. First ball of the over number fourth, and quite neatly plays it down to deep long off region for a single by Pradyumn, and he just wanted to give the strike as much as possible to Raghavendra. And scoreboard now 14 for the loss of 2 wickets. 14 on the board. Ravindra is the bowler. Again, across the line of the delivery, shuffled across. Before that, the bowler is going to deliver the ball. Look at the way Raghavendra, where he was standing. He's standing well outside the line of off stump, because he's got a lot of advantage when he was doing batting like that. This time, I think the batter is not ready. And umpire says it is a dead ball, rightly so. Sometimes it's a very difficult for the bowlers whenever the batsman wanted to disturb the attention of the bowler as far as the line and run is concerned. This time again, beautifully balled. That was a perfect line to ball. Whenever the batters are looking shuffled across the line of delivery, looking for the big swing of the bat in the onside region, it's just following the batter. And that's so important for the bowlers. You need to see which line is going to be better when the batsman trying for the big swing of the bat towards the onside region. Again, he's standing in the same region, outside the line of off stump. The full toss delivery lofted, but not really having enough bat onto that. The fielder there in the deep long off field region, it takes a catch, and this time, I think the hero of the previous match, Raghavendra, not really doing too much from his bat. He's back into pavilion, and Shetty Warriors has got the big wicket. The wicket of Raghavendra is walking towards the middle, walking towards pavilion in a disappointment way, and with the jersey number 18, the lucky jersey number for him, the jersey number 18 coming back to the international cricket, Virat Kohli, the wears that jersey number 18, and it's upon the women's cricket, Smriti Mandana wears that jersey number 18, but in this particular match, Raghavendra not really able to continue what he left in the previous match. That's only because of Shetty Warriors, different bowling department they got. All the bowlers are looking pretty good. Not really settle Raghavendra for any kind of big shot. Again, the full toss delivery, slashed that one. And not really able to beat the infield. And then before that, backward point fielder fields the ball. Pradyumna picked up a single for that. With that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Again, Ravindra bowling away from us, right arm over the wicket, and watching the ball till the last moment. Misjudgment by the batter in the relegation. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batters. Fantastic over. This comes to an end here. Again, the Shetty Warriors bowlers are really enjoying the condition under the light, under the floodlight. It's a different ball game. I already mentioned. The bowlers are getting a lot of advantages rather than the batter. Even the ball is very hard in the nature, but still, if the bowlers bowls a good line and land, they can create some problem for the batters. So far, it's a slow going. The very quiet cricket is going on now. 15 for the loss of 3 wicket after completion of over number 4. Still, a run rate is not that much of a healthy enough for strikers. It's 15, just under 4 runs per over run rate. But desperately, they wanted to improve that run rate in a remaining 2 overs. Ram Ganesh, one more fantastic all-rounder for the side of Shetty Warriors. Always is dealing some slog overs whenever Shetty Warriors wanted some restriction from the bowling. So far, he's got a very good tournament, Ram Ganesh. Again, look at the delivery. Absolutely perfect, isn't it? Absolutely good to see that. A different kind of bowling action. He starts very slowly. When he's coming near to his bowling crease, he's a little bit getting some extra speed in his bowling and getting some extra bounce as well because of that. Look at that one. This time again, one more very good delivery in the air. They're going up. They're appealing for caught behind. Umpires are unmoored. But here is non-striker almost came into the striker's end. But more than confident Devil. That's just an excitement behind the wicket, with the wicketkeeper behind the stump. No, exactly that ball is hit the shoulder of the batter of Pradyumna. Then ball is ballooning up. And that's why both the umpires are not interested in for that appeal again.
Wow, what a delivery. What a delivery. That was a fantastic. Seeing that Pradyumna shuffled across the line of the delivery and he straight directly is bowled to the leg stump of Pradyumna because he's just exposing his leg stump. When the batter's exposing your leg stump, then I think you were giving us exact idea for the bowler where to bowl. And that's why Pradyumna is unfortunately is back into pavilion because of that beauty of the delivery. Ram Ganesh, I already mentioned, is one of the best bowler in that bowling department for the Shetty Warriors. So far, he's looking pretty good in this particular over. He is the one who bowled 2 maidens in this particular tournament. And we are talking about the maiden. Here is a white ball bowled there by Ram Ganesh. A little bit excitement because he picked a wicket in the previous delivery. So he wanted to pick one more in the same line. But this time direction a little bit outside the line of leg stump. So that white call by umpire. 16 for the loss of 4 wicket. Ram Ganesh. Delivery. Oh, what? Look at the delivery. Just like you are watching international cricket. The kind of bounce looks like it was we are watching the match in SCG cricket ground. That kind of bounce is getting here. Absolutely fantastic delivery indeed. Catching the batsman in the crease. The batsman is in the 2 mind whether go for the cut shot or not. By doing that, ball is just passing the outside edge of the bat. Beautifully bowled. Again, just push that one. And on his follow through, Ram Ganesh feeds the ball, not trying for the run out. You know exactly that there is no backup, so he's not interested to hit the stumps in the non-Sega zone. Just a single here, and with the single scoreboard was on to 17 for the loss of 4 wicket. The match is inching towards a low-scoring game. Ram Ganesh. Beautifully bowled. This is a perfect off-cutter in the negation. Incoming delivery. And jagging back into the batsman in the negation. Extra bounce as well. And the batter has no clue in that particular delivery. One more fantastic over there from Ram Ganesh. 5 overs completed after completion of over number 5. And yes, Tigers are really looking in a deep trouble. 17 for the loss of 4 wicket. Now last 2 over remaining in their innings. The low scoring game in this particular game is at 30 is a target. I think so. 29 which is a low scoring game. But they depended that one. That's very important. Here Titans are depended that total 29 runs, but here is a 17 on the board. Last over is in progress, and they need to throw their bat in the last over if they wanted to get some respective total here. 2 batters are in the middle, need to do something special in this last over. So young talented bowler brought into attack. Granth is a left arm bowler bowling away from us. Right arm over the wicket. Slow over one, slower short pitch delivery, and the batter looking for the pull shot, but not more than a single in the negation. With that single, scope moves on to 18 on the board for the loss of 4 wicket. Granth not having that much of well-built personality, but very impressive. See that his line and length. He's putting his 100% in each and every delivery which is bowls. Granth, a left arm bowler. Now one fielder added, one extra fielder is added to offside region down to gully region. The back point. One at short third man, one at short cow point, and one at mid off. Pulls that one, and ball is sailing over and over into the crowds. And that was a much required treatment coming from the blade of the batter. Dinesh is a very experienced campaigner, know exactly. He was dealing with the final over, not having enough runs on the board. They need to get 1 or 2 big shots in this final over. And because of that bound, his score jumped into 24 now for the loss of 4 wicket. Short pitch delivery, all the time in the world for Dinesh to go back. And pulls that one down to deep mid wicket. That was the shortest part of the ground as far as the UCG cricket ground is concerned. The fine leg and square leg a little bit shorter for the right-hander batsman when he was batting in that end, far end. You cannot bowl that line, short pitch delivery. Batters always enjoying that full shot.
Again, now left arm. Beautifully ball. That was the line. That was the line you need to ball. Again, that ball has got a deviation as well. And a good comeback. Very good comeback by Grant. And scoreboard moves on to 20. Remains on 24 now for the loss of 4 wickets. The next delivery delivers. Fantastic one. Dinesh again negotiated very well for that Yorker land delivery. So one more addition to total addition of that single. Scoreboard moves on to 25. Very hard for 25 for AS Strikers. Last 2 deliveries left in the innings. 25 on the board. They needed 1 or 2 big shots in this final 2 deliveries of their innings. Lot of changes in the fielding now. Different wheel set for 2 batters. 5th delivery. Beautifully ball. Look at the wicket keeper behind the stump. It not really removes the bails. In fact, looks like the batter is out of the crease. But he's standing a little bit away from the stumps, the wicket keeper, so that he missed the stumps. The dotted delivery. Good comeback. Good comeback there by young bowler. Now last delivery remaining in this over. The innings of Strikers. Last delivery. Again the dotted delivery. Fantastic delivery to finish the over. Even though he conceded 6 runs in that over, but still I think it's a good over. Absolutely it's a good over. So over number 6 completed. Then AS Strikers are really not looking in that much of comfortable position. They got only 25 runs in 6 overs. They stipulated 6 overs. They set a target of 26 to win this match for Shetty Warriors. And wait to see how well AS Strikers will going to defend this total. And I think it's going to be a difficult one, but not impossible in cricket. If you see the history of this particular cricket tournament, even the 29 is depended very well in this tournament. You cannot lose the off. The self-confidence is more important for AS Strikers. They need to bowl very well, need to bowl some attacking bowling performance in the beginning itself. They need to pick the wickets. Then only the gate will going to open here for AS Strikers to win the match. Wait and see that kind of strategy, kind of game plan here from AS Strikers, and wait and see how well Shetty Warriors batters will going to get this the moderate total of 26 to win this match. So changing the committee box as well. Once again, I would like to invite our close friend Mr. Imo, and in our state language, sweet language, Kannada. Over to Imo. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಗೆಲ್ಲಲು 26 ರನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 36 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಧಾರೆಯನ್ನು ಎರೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಡುವಂತಹ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತ. ಕೊಂಚ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ರನ್ ಮುಖೇನ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಮಲ್ಲೇಶ್ 4, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಳೆಯದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರನ್ ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಶಿತ್ ರವರು ಬಂತಡಷ್ಟಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಸ್ವತಃ ಬೌಲರ್ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 30 ರನ್ನನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ AR ಟೈಟನ್ಸ್ ಇದೇ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕಾದು ನೋಡುವ ಅದು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರುಹೋಗಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಫಲರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ, ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ 8. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತರದ ಪರವಾಗಿ CA ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ. ಪುಲ್ಟಾಸಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಘಾಟೇರವರು ಬಂದ ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ನೋಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ 9. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 17 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಎಸೆತ 17 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಧಾರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ CA ಮಲ್ಲೇಶ್. ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗದೆ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಫಲರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್. CA ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ NJS ತಂಡದ ನಾಯಕ ಧನುಷ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸುಖೇಶ್ ರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇಂತಹ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಲೀಂ ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಬೇಡದ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ರನ್ನಿಗೆ 1 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ CA ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್, ಅಲ್ಲಿವರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ CA ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಯ ಮೂಲಕ CA ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ CA ಮಲ್ಲೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ CA ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ CA ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕೆ ಪ್ರವೇಶ 10, 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್. ಜಿತೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಟಗಾರ ರಾಮ್ರವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟಿನ ಕೂದಲಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುಟ ರಕ್ಷಕ ಸುಕೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ರವರ ಕೈಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ
ಕಾದು ನೋಡುವ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಚೆಂಡು. 6 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16, 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನ, ಕರಾರುವಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಿತೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ NJS ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. NJS ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಇನ್ನು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟು ಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿಶೇಷ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿನ ಕೆಳ ಅಂಚಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ 1 ರನ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್, ಬೌಲಿಂಗರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ದಾಟಿ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಮಲ್ಲೇಶ್. ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್. ಆ 1 ರನ್ನ ಮುಖ್ಯನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂದ ಮತ್ತು 18 ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರನ್ನಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತಹ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮ ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟು ರಾಮ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಬೇಡದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಗಿ ಎರಡನೇ ಉದರಿಯನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು. ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಪ್ ವೇವ್ಸ್, ವಿಜಯ, ರೀಮ್, ಸಿಟಿ ಅರೇನಾ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಕಾಳಿಚರಣ್, ರವಾಲಿಯಾ, ಸಾಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು, ಲೋಕೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, MCC, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್, CA ಜೇಸನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, CA ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಣೈ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ವತಿಯಿಂದ, ಮಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಈ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಜೋಡಿಯಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಚಾಲೆನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಜಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೇಡೆ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜೇಶ್ವರ್, ಆತ್ಮರಾಮ್, ರಾಜರತ್ನಂ, ವಿವೇಕ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸುಬಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ CA ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ CA ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ CA ಸಂಜನಾ ಸುಭಾಷ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ದೂರದ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂತಹ CA ರಾಧಿಕಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದು, 17 ಎಸೆತ 3 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯದ ಮಂದಹಾಸದ ಕಾರಣಭೂತರು, ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ CA ಮಲ್ಲೇಶ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಏರಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಟು ಮಲ್ಲೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಾಸಿದ್ರು. ಬಂತ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ನೋಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ NJS ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ 2 ತಂಡಗಳಾದಂತಹ NJS ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಟು ಅಶ್ವಥ್. ಬಾರಿ 4 ರನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 14 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಟು ಅಶ್ವಥ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿದ್ರು ಶಫೀರ್ ಅವರು. ಬಂತ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಬಿಗುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ 1 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಹರಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರ ವತಿಯಿಂದ, ಆಟಗಾರರ ವತಿಯಿಂದ, ಮಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ದಿನೇಶ್ ಅಶ್ವಥ್ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಜಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಜೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ 12th man here. The commentator desk, I request Dhanush D. Bolar and Vinith Shetty to send their 12th man because we wanted the playing 11 to update a score in the Cricket Heroes. ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ? ನಾಳೆ ಸಿ ಎ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಿ ಎ ವಸಂತರವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಿ ಎ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಗೋಪಿಜಿರವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. धन्यवाद श्रीमान इम्मो। और जहां तक सवाल है इस वक्त मैच का, तो टीम एनजेएस और उडुपी टाइगर्स के बीच में इस वक्त मैच शुरू हो चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार स्टंप्स पर आई। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था लेकिन नाकामयाब, और गेंद इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में पहुंचते हुए और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त
विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद एब्सोल्युटली मत स्ट्रेट लाइन, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंदबाज हैं इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बेहतर लेंथ और लाइन के साथ वेदांत, और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए शिवराज, जबकि नॉन स्ट्राइक लाइन पर भुवन इस वक्त मौजूद, और वेदांत अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, चूके और गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराते हुए पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। शिवराज की पारी समाप्त। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और उनके स्टंप्सों पर टकराई लेग स्टंप पर, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है शिवराज के रूप में, और 0 पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर उडुपी टाइगर्स, और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त कर चुके हैं इस पहले ओवर में गेंदबाज वेदांत। तो 0 पर पहला विकेट खो चुका है। दर्शन का आगमन यहां पर हो चुका है एज ए नंबर 3 बैट्समैन फॉर दिनेश, माफ कीजिए, और इस बीच गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, स्टंप्स पर कवर करते हुए इस वक्त जस्ट मनाते हुए खिलाड़ी यहां पर देखना पड़ेगा वहां पर असल में क्या हुआ था। बोल्ड आउट, मेरे ख्याल से गेंद स्टंप्सों पर टकरा कर इस वक्त निकल चुके थे, और यहां पर हमें ठीक से यहां पर पता नहीं लगा कि एक्चुअली व्हाट वाज हैपन देयर, और इस वक्त मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से शायद बल्लेबाज के शरीर से गेंद टकराने के बाद स्टंप्सों पर गिरी होगी, और यहां पर ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। 0 पर 2 विकेट, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली डिजास्टर स्टार्ट फॉर उडुपी टाइगर्स। 0 पर 2 विकेट गिर चुके हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल कुछ हद तक मंडराते हुए उडुपी टाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाज वेदांत इस वक्त 2 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं, और तो हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त वेदांत तैयार। यह गेंद अच्छी गेंद, मत स्ट्रेट लाइन, रक्षात्मक तरीके का खेल, और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा। मेडन एंड 2 विकेट्स, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट फॉर वेदांत। 0 पर 2 विकेट, और जिस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद की थी एनजेएस के कप्तान ने, वो उन उम्मीद अपेक्षाओं को काफी हद तक साकार कर चुके हैं एक बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत के जरिए गेंदबाज वेदांत, और अभी भी उडुपी टाइगर्स को अपना खाता यहां पर खोलना बाकी है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, अनंत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। रात के 8:30 इस वक्त बज चुके हैं, और निस्संदेह यहां पर दर्शकों की संख्या कुछ हद तक बढ़ चुकी है। शाम को जितने दर्शक थे उससे कुछ ज्यादा दर्शक इस मैदान के चारों ओर इस वक्त नजर आते हुए खामोशी के साथ मैच का मुआयना यहां पर करते हुए। और जहां तक का सवाल है इस श्रृंखला के 11वें मैच का, तो ये मैच यहां पर प्रगति पर है। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, एक्स्ट्रा लाइन, विकेट कीपर द्वारा तेज तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित, और इस वजह से कोई क्षति नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0-2 विकेट के नुकसान पर। तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त अनंत तक कर चुके हैं, और स्कोर अभी भी रुक चुका है 0 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रन से एक बार फिर से नहीं मिलेगा। तो एक दोनों बेहतर टीमों के बीच में इस वक्त संघर्ष
जारी है और गेंदबाज इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद का पीछा करना चाहते, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट बाय बैट्समैन, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर द्वारा और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है उडुपी टाइगर्स का और 2 विकेट के नुकसान पर। तो अनंत इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, गेंद की उछाल को पहचानते हुए पहले सोचा कि गेंद पर स्ट्रोक खेला जाए लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद की लाइन से बल्ले को अलग करते हुए गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की और इस गेंद पर कोई रन बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, स्टंप से ऊपर गेंद इस वक्त उनके पैरों पर टकराई थी, गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और उनके पैरों पर टकराई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो 1 रन पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है और गेंदबाज अनंत एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, ओवर पिच गेंद थी, गेंद को इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर खतरा हो सकता था अगर फील्डर स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो करते तो, लेकिन उन्होंने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर और इस बीच बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। तो अभी भी स्कोर 1 रन पर रुक चुका है और भुवन इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार अनंत की गेंदों का। 5 गेंदें अब तक खेल चुके भुवन और अब तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद कट करना चाहा ऑफ द बैक फुट, चूके पूरी तरह गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक और बेहतर ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद सिर्फ 1 रन जोड़ चुका है यहां पर उडुपी टाइगर्स। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा, absolutely fantastic start in bowling department made by the both bowlers who bowled the first 2 overs for NJS. 1 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs and this is an absolutely a shackling start for Udupi Tigers. 4 ओवर का खेल बाकी और let's straight away coming back to the points table। तो यहाँ पर 3 मैचेस दोनों टीम ने खेले हैं और जहाँ तक उडुपी टाइगर्स का सवाल है 3 मैचेस में 2 मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किया है, 1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और जहां तक एनजेएस का सवाल है टीम एनजेएस ने भी 3 मैचेस खेले जिसमें से सिर्फ 1 मैच में उन्हें विजय मिला है जबकि 2 मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है। अंकों की तालिका अगर देखी जाए तो 4 अंक इस वक्त उडुपी टाइगर्स के पास है जबकि टीम एनजेएस के पास है सिर्फ 2 अंक, तो उडुपी टाइगर्स से भी ज्यादा इस वक्त टीम एनजेएस के लिए इस मैच पर विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है। तो यहां पर 2 ओवर में सिर्फ 1 रन प्रदान कर चुका टीम एनजेएस के गेंदबाज और यहां पर ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाहा लेकिन गेंद लगभग उनके बल्ले के हाथ के अंदरूनी भाग पर टकराने के बाद सीधे फॉरवर्ड शॉट लेग पर गई और फील्डर ने गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया और इस बीच बल्लेबाज को रन यहां पर नहीं मिला। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला, इस वक्त हवे में स्वयं गेंदबाज आते हैं, नहीं इस बार हम लिमिट ऑफ के फील्डर गेंद तक पहुंचे और पहले सोचा कि लिमिट ऑफ के फील्डर ने गेंद को गेंदबाज लपकेंगे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन से गेंदबाज हट गए थे और जैसे ही गेंद जमीन पर गिरने ही वाली थी अपने दोनों हाथों को उन्होंने बढ़ाया आगे की ओर और गेंद उनके हाथों में बैठ गई और कैच लपकने के बाद आश्चर्यचकित होकर उन्होंने गेंदबाज की ओर देखा कि जी भैया आप कैच क्यों नहीं लपके, लेकिन यहाँ पर कैच वो लपक चुके हैं और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर 1 for the loss of 3 wicket and this is the 3rd over in progress. So disaster continuing here for the batsmen of Udupi Tigers now and 1 for the loss of 3 wicket. 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज श्रीशा दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद विकेट कीपर भी चूके इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास
समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का, और इस 22 के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। कोई भी रन बल्ले से यानी बैट से अब तक नहीं बनाए, तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ अब तक टीम एनजेएस के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। ये गेंद इस बार उछाला एंड ही जस्ट प्लेड दैट वन इन स्टाइल। नागराज के बल्ले से ये छक्का यहां पर लग चुका है और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक उडुपी टाइगर्स की ओर से इस वक्त लग चुका है नागराज के बल्ले से। ऐसा कहना पड़ेगा, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से काफी ऊंचा लॉन्ग ऑन क्षेत्र से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और नागराज एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। छक्का जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास वो प्राप्त कर चुके हैं और एक बार फिर से शीशा की गेंद का सामना करते हुए कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा कम से कम। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है उडुपी टाइगर्स के लिए। और इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में। ओवर की समाप्ति, एक और बेहतर ओवर की समाप्ति। सिर्फ 7 रन इस ओवर में बने। 3 ओवर के बाद 8 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा उडुपी टाइगर्स परेशानियों के जंजीरों को तोड़ने की पूरी कोशिश यहां पर करता हुआ। 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन 3 ओवर में उडुपी टाइगर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो चौथा ओवर यहां पर इससे पहले कि प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को एक बार फिर से आमंत्रित यहां पर करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, the fantastic bowling performance here from team NJS in this particular match against a very strong opponent, Udupi Tigers, and only 1 over, which is they got the runs in the previous over, as Nagaraj got 1-6, and because of that they got 8 runs after completion of 3 overs, and they lost 3 valuable wickets. So, from the commentary box end, it's the start of the over number 4. Tanush will start the 4th over. Right arm over the wicket, beautifully bowled again. Wicket keeper behind the stump, fails to collect the ball. Chance of run out in the last seconds, and that ended in an overthrow. What could be a certain chance of run out? Then wicket keeper behind the stump, little bit shown as a negligence, so that they completed a single with addition of their single scoreboard moves on to 8 on the board, 9 on the board for the loss of 3 wicket. So now Nagaraj back on strike. Dhanush balls outside the run of off stump, too far, and a wide call by umpire because that ball has got a deviation, and just safing away from the right-hander batsman, pitched outside the line of off stump. Then he got a deviation, and rightly so umpire call that was a wide. So with that wide, scoreboard now was on to 10 on the board for the loss of 3 wickets. Again Dhanush bowling away from us, right arm over the wicket past umpire Vivek. This time he pushes that one onto cow point region. Again the fielding is not up to the mark. Again the certain chance of run out because non-strike has already started his run to pick the single. Nagaraj is not interested, but at that time the fielder at a short extra cover region misfielded, and that's why they completed a single here. 11 on the board for the loss of 3 wicket. Again Tanosha bowls looking for the pull shot. Again there is opportunity of run out. Again they completed that single. And Udupi Tigers, they know exactly they're not having that much of overs left. They have to look for each and every runs. And they got one more single as well. 12 for the loss of 3 wicket. Dhanush bowling away from us, right arm over the wicket. The short pitch delivery cuts at one, but straight to the hands of cover point. This is a huge wicket.
This is a huge wicket here for team NJS because the danger man Nagraj, one who hit the 6 in the previous over, is departs. Little bit short pitch delivery, inviting the batsman go for the uppercut and just taking the invitation from the bowler. He cuts at one, but not quite able to get the distance right as the fielder in a right position there at deep cover point region. And he's back into pavilion. Scoreboard is now 12 on the board for the loss of 4 wicket, and very important breakthrough there for Dhanush. Really very important breakthrough. So new batters. Aditya is in the middle. Chance of round in non-striker and easily done. Easily done. The one more wicket is back into pavilion now. Udupi Tigers. We are in a deep in trouble. Dhanush again finished a very good over. So one more delivery left in this over, but its score is 12 for the loss of 5 wickets. NJS are really putting very hard in this particular match. They needed to be, because they wanted to win one more match out of 3. They won the one. So if they wanted to remain in the competition, they have to win the match. This time he pulls that one right in the gap. Fielder and the deep mid wicket. Slow movement from the fielder. So that ball is running down to deep mid wicket region, and very good hand there from the fielder. And they got just a couple of runs here. Excellent piece of fielding actually followed by the fielder at the deep mid wicket region. And they got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 14 for the loss of 5 wicket after completion of over number 4. So 4 overs completed, last 2 overs remaining in the innings of Udupi Tigers. Vinith is in strikers end. Bhuvan is in non-strikers end. The over number 5 will going to start from the far end. Of course, the IPL fever is started from today. The last year's champion CSK takes on the runner-up of last year, KKR. But disappointment start from CSK as they're struggling against KKR, batting first 71 for the loss of 5 wickets. When the last reports came, and 14 or 15 overs completed. Again, here's the second delivery. The chance of run out to direct it, but I think batsman is safe here. Bhuvan is safe, and one more addition to total, and with the addition of that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 5 wicket. 16 for the loss of 5 wicket. Vedanta to Bhuvan. Oh, what a delivery. Absolutely perfect one in the negation. Lovely shape in that delivery. The good land spot, that ball is bowled and just snip back into the batsman. Batsman going for the cut shot. Extra phase in that delivery as well. And Vedant bowled a beauty of the delivery that just going over the top of the bails. The wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. Again Vedant seaming in from the far. Ball him, cleaned him up. Oh my goodness, bails are not off. The bye call by umpire. Can you believe this? It's definitely going to be a fantastic. The luck going in favor of Bhuvan. That was a fantastic Yorker land delivery. Ball hits the stump, but bails are not off. The luck is a fundamental ingredient in success. The batter has got a luck here. They cleaned him up, but still is safe. 17 for the loss of 5 wicket. Vinith back on strike. Oh, what a delivery. What a delivery that from Vedant. He is not happy with the wicketkeeper behind the stump. One more bye. That was ball is a little bit kept low in the negation. Again, that ball just missed the off stump, I must say.
And excellent display of bowling performance there from Vedant. The fast bowling, the quicker deliveries. So far, it's a very good going year for Team NJS in this particular match against Udupi. This is the over number 50 is in progress. Vedanta, right arm over the wicket, he bowls. This time he going for the pull shot and got a top edge but landed very safely. And going for the second run as well quite easily. They made it. With that couple of runs and scoreboard numbers on to 20 for the loss of 5 wicket. The last delivery of the over number 5 will go into start. So a good number of touts enjoying the game of cricket here in this most beautiful UCG cricket ground under flood light. Again looking for the pull shot, lovely short pitch delivery again from the bowler, not really giving that much of width for the batter to go for the full shot, just following the batter. Excellent over there from Vedant, completion of over number 5 and they're able to score 20. For the loss of 5 wickets. Just I want to see the bowling figure of Vedant. He's got a fantastic bowling figure of 2 overs, 1 maiden, conceded 4 runs and he got valuable 2 wickets. Outstanding bowling display. The economy is just 2 runs per over. And one must say this is definitely it's a match-winning performance from Vedant. Outstanding display of fast bowling. Now last over remaining. Only 20 on the board. The bowler from the commentary box end. Vinit Acharya. Bowling to Vinit Shetty. Vinit to Vinit. Last delivery, fulls that one. Right in the gap. And fielder drops the catch. Once it looks like the ball is just going away from that square leg fielder, deep backward square leg fielder. He got a hand onto that, tried to take the catch. But unfortunately, he's dropped the catch. Otherwise, it's definitely going to be a good catch. Just a single there. We can see it in the replay. The effort up in the fielder there. Absolutely the fantastic effort from the fielder. He's just able to stop that 6, which is probably the 6. If he's not able to reach there. But he's reached there and is stopping some runs for his team as well. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 22 for the loss of 5 wicket. Vinit bowling away from us. Right arm over the wicket. Pass umpire, lovely switch it, but protection there at the deep cow point region. Again, they're going for the second. Excellent running bit at the wicket. Again, the couple of runs, they're dealing with the final overs. That's why both the batters are looking for each and every runs in this final over. They wanted to get most of that runs in this final over. Then scoreboard now moves on to 24 for the loss of 5 wicket. Now last 4 deliveries remaining in the innings. Vinit. Right arm over the wicket. Wide outside the run of off stamp. Just getting away from the line of the delivery. Vinit seeing the line of the delivery. It is wide. One more addition to total with the addition of the single. Scoreboard moves on to 25 for the loss of 5 wicket. Vinit delivers. Wicketkeeper fails to collect the ball. And one more addition to total in the form of bye. Frustration for the bowler because he able to beat the bat of Vinit. But wicketkeeper fails to collect the ball. Extra run comes into play. 26 now. Now last 3 deliveries remaining in the innings. Vinit bowling away from us. Right arm over the wicket. Beautifully bowled. Again the wicketkeeper fumbles. This time chance of run out in the non-striker's end. So one more wicket is back into pavilion. 26 for the loss of 6 wicket. Now last 2 deliveries left in their innings. Can Udupi Tigers will go into roar here. The 2 deliveries remaining. They need to get some big shots. Not having enough runs on the board. The last final 2 deliveries will go into beginning here. Right arm over the wicket. Again shuffled across the line of the delivery. Chance of run out in the non-strikers end. Wicketkeeper not interested. Maybe he's thinking about why to waste the time here.
It takes a little while, at least 30 to 1 minutes for new batsman coming into bat, so that he doesn't want to see that. They're helping the organizer to finish the match too early. And again, right arm over the wicket, Vinith delivers. Going for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Misfield by the mid-on fielder. Looking for the second. In comes the throw from the fielder. And a run out taken place in the last delivery of the over. They got only single. And while trying for the second run, the run out taken place at 27, the total score of Udupi Tigers. And they set a target of 28 to win the match for Team NJS. I think they did a great job in this particular match. The bowlers did the job. Now all up to the batsmen of NJS to get that moderate total of the very small total of 28 to win this match. And wait and see how well Udupi Tigers will going to defend this small total, and wait and see how well the batters of NJS will going to get this total. And wait and see the strategy from both the teams to win this match. And meanwhile, change in commentary box as well. Again, I would like to call upon Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Welcome, Gopi. धन्यवाद सतीश। तो 28 रनों का लक्ष्य इस वक्त टीम एनजेएस के लिए रखा है उडुपी टाइगर्स ने, और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, एग्जैक्टली 4.66 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए लोकेश, और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम एनजेएस का। एक रन 90 किसी नुकसान के, और भरत इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। लोकेश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए भरत इस वक्त लोकेश के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, मच स्ट्रेटर लाइन, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, और चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक सवाल है उडुपी टाइगर्स के विजय का, तो इस वक्त 27 रनों के अंदर रोक कर रखने के लिए निस्संदेह एक घातक गेंदबाजी उन्हें करनी होगी पारी के पहले ही ओवर से। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर भरत तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया कलाइयों के सहारे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। जहां तक टीम एनजेएस का सवाल है, तो इस वक्त
एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है अगर उन्हें 28 रनों के विजय के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और यहां पर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं लोकेश। धनुष बोलार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। भरत ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को खेला शॉर्ट पिच विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े। निशाना इस वक्त टकरा चुका है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास और इससे पहले कि लोकेश स्ट्राइक रन पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचा इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर का, स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है 2 रनों के योग पर। और लोकेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो पहला झटका यहां पर लग चुका है टीम एनजेएस को। तो दिनेश जो फील्डर थे जिनका फेंका गया वह सीधा थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और यहां पर पहला विकेट टीम एनजेएस खो चुका है 2 रनों के योग पर। 26 और रन चाहिए विजय के लिए। और नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से श्रीशा इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए और पहले ही ओवर में एक विकेट, पहला विकेट गिर जाने के बाद एक हल्का सा दबाव इस वक्त टीम एनजेएस के ऊपर दिखाई देता हुआ। और जहां तक बल्लेबाज श्रीशा जो नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर उतर रहे हैं उन्हें इस वक्त साथ निभानी है धनुष का। तो यहां पर जो कमी इस वक्त नजर आ रही है साझेदारी की, वो साझेदारी को उन्हें इस वक्त निभानी होगी। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 for the loss of 1 wicket. Match number 12 of this tournament is now progressing year of KVC Premier League Season 3 2022 और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था ऑफ साइड पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, चूंकि बल्ला ऊपर से अड़ा गए, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेग थ्रो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भरत। और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो श्रीशा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, इस बार कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट कट करना चाहा था पंजों पर उछलते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंचे एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 for the loss of 1 विकेट। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है उडुपी टाइगर्स के गेंदबाजों को। अगर उन्हें 27 रनों के अंदर टीम एनजेएस के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहा था, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, चूके पूरी तरह विकेट कीपर भी चूके और यहां पर इससे पहले की गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका। तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त भरत यहां पर कर चुके हैं और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 28 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कर चुका है टीम एनजेएस। सिर्फ 4 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। शिवराज गेंदबाजी का क्रम इस वक्त जारी रखते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रीशा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और जहां तक सवाल है तो ओवर की पहली गेंद लेकर शिवराज ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया है खूबसूरती के साथ तक कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद इस वक्त फील्डर के साथ सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट रॉक्ड ऑन द बैक फुट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड, स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट वाइड ऑफ द पॉइंट फील्डर और इसकी वजह से चौका वो प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त ऑफ द बैक फुट, उछलते हुए गेंद को खेला नॉन स्ट्राइक एंड पर खतरा, लेकिन थ्रो काफी वाइड और कोई बैकअप नहीं वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर। निस्संदेह निशाना स्टंप्सों पर टकरा था नॉन स्ट्राइक एंड पर, या पर दूसरे फील्डर कोई अगर वहां पर बैकअप करते तो रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन वहां पर कोई बैकअप नहीं, थ्रो काफी वाइड
स्टंप्सों से और इस बीच बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर लौट चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर शिवराज इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया है। कवर पॉइंट सीमा रेखा के सीढ़ियों पर गेंद टकरा चुकी है। चौका नंबर 2 इस ओवर में लगता हुआ पंजों पर काफी शक्तिशाली इस वक्त दिखाई देते हुए बल्लेबाज शीशा। ये गेंद थी, थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया कदमों पर उछलते हुए और आखिरकार चौका वो प्राप्त करते हुए इस गेंद पर। चौका नंबर 2 इस ओवर में लग चुका है। 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को जगह बनाकर खेलना चाहा, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। जो 2 चौके इस वक्त शीशा लगा चुके हैं, उन 2 चौकों की बदौलत जो दबाव बना हुआ था टीम एनजेएस के ऊपर, वो दबाव अब काफी हद तक कम हो चुका है। और शिवराज की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर थोड़ी देरी से दौड़े और रन पूर्ण कर चुके हैं। यहाँ पर अगर शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद को थ्रो करते यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो शायद खतरा हो सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन उन्होंने थ्रो किया स्ट्राइकर एंड की ओर और इस वजह से बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ तो यहाँ पर 1 रन मिलेगा और 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 15 रन और चाहिए विजय के लिए और शिवराज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फील्डर को पहले पीछे भाप लिया था। बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश करते हुए ऑफसाइड पर शॉर्ट कवर पर 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 14 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पूर्ण हो चुका है। 2 overs completed and now after completion of 2 overs team NJS looking in a comfortable situation now after being slower start. Now they managed to score 14 runs in the first 2 overs for losing just a single wicket, and now just 14 more runs they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking run rate is now coming down to exactly 3.5 runs per over at this situation for team NJS. और जहां तक सवाल है टीम माफ कीजिए उडुपी टाइगर्स का, तो इस वक्त उन्हें एक चमत्कारी गेंदबाजी की सख्त जरूरत है इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। आदर्श गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, भरत माफ कीजिए गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और अपना दूसरा ओवर वो प्रारंभ करते हुए। पहले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी उन्होंने की थी, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए थे और उस ओवर में 1 विकेट भी गिरा था रन आउट के रूप में। और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद और बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करने के बाद भरत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और भरत दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ पर, रन के लिए दौड़ पड़ी, नजदीकी मामला इस बीच, लेकिन नहीं, मैं समझता हूं वो क्रीज पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर तेजी के साथ विकेट झटका है, माफ कीजिए गेंदबाज विकेट झटका है, बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे और 1 रन सुरक्षित तेज रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए पूर्ण कर चुके थे। 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब शीशा द मैन बैक ऑन स्ट्राइक हु हिट अ कपल ऑफ बाउंड्रीज इन द प्रीवियस ओवर, इस बीच सामना करने के लिए तैयार। पटकी विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड अपील, लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन वाइड के रूप में जुड़ता हुआ 16 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज भरत एक बार फिर से तैयार शीशा के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार और बेहतर एब्सोल्युटली सुपर्ब गेंद, जिस तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ इस वक्त फील्डर के हाथों में पहुंची, उतनी तेजी के साथ गेंद की लाइन पर अपने हाथ को लाते हुए गेंद को दोनों हाथों में दबोच लिया और इस बेहतर कैच की बदौलत यहां पर विकेट शीशा का गिर चुका है। इस बेहतरीन कैच की बदौलत और शीशा की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भुवन फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को लपका काफी तेजी के साथ और दूसरा विकेट शीशा के रूप में गिर चुका है 16 रनों के ऊपर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Prakshit, the man is now comes out to the middle as the number 4 batsman for team NJS.
जस्ट 12 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 3+ ओवर्स। और प्रक्षित इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहा और भरत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। धनुष नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और अगली गेंद लेकर इस वक्त भरत तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रक्षित के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट, गेंद पहुंची सिली मिड ऑन पर। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 6 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और उडुपी टाइगर्स के कप्तान इस वक्त जानते हैं कि रन से काफी कम बनाने हैं सामने वाले टीम को, इस वजह से सिंगल्स को रोकने का पूरा प्रयास हो करते हुए यहाँ पर इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, लगभग लेग भी विकेट होता इस श्रृंखला में तो शायद ये प्लम इन फ्रंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लेग भी विकेट ना होने की वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। गेंद उनके बैक लेग पर टकराई थी अंतिम क्षण में और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और भरत एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट पटके हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद को खेला मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं और थोड़े से झिझके जरूर पहले, लेकिन तुरंत संभलते हुए रनों डेंजर रन की ओर वो दौड़े नॉन स्ट्राइक रन की ओर और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अब द मैन दर्शन इज नाउ, इनफैक्ट इट्स धनुष इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल एंड दिस कुड बी डिजास्टर इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली हिट टू द स्टंप्स, लेकिन निशाना चूका और 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। And now the total ball is moving up to 18 now for the loss of 2 wicket and 3 overs had been bowled. तो 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं और 3 ओवर का खेल बाकी, 10 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक घातक गेंदबाजी की तलाश है इस वक्त, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ गेंदबाजों को उडुपी टाइगर्स के। और यहाँ पर बल्लेबाज धनुष जो कि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज नागराज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं उडुपी टाइगर्स को जितना इस मैच में जीतना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है इस वक्त टीम एनजेएस को, क्योंकि पहले 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच में टीम एनजेएस विजय दर्ज कर चुका है, 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर उडुपी टाइगर्स का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, 3 मैचेस में 2 मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किए, 1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर देखते हैं इस मैच में कौन विजय दर्ज करता है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड, 1 रन का इजाफा, इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज नागराज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। रात के 9:15 यहाँ पर बच चुके हैं। फ्लड लाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त नागराज तैयार। ये गेंद इस बार स्टीयर किया, गेंद जाती हुई शॉर्ट टर्न पर मिसफील्ड इस बीच, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं था, अंतिम क्षण में नो बॉल का भी इशारा और इस बीच 2 रन का इजाफा वहां पर हो चुका है। 1+1 2 runs now added to the total. It's 21 for the loss of 2 wickets, just 7 to get now. और इस बीच गेंदबाज नागराज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। टीम एनजेएस के बल्लेबाजों को हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बनाते तो आसानी के साथ वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, आक्रामक रवैया अपनाते हुए गेंद सीमा रेखा के अंदर, शायद वहां पर नहीं, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। हालांकि गेंद टिप्पा खाने के बाद अपने रफ्तार को खोई थी जरूर, लेकिन धीरे धीरे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ 25 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ
2 विकेट्स और चौका इस वक्त जड़ चुके हैं प्रक्षित। एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर कैच छूट चुका है और इस बीच बल्लेबाज एक रन प्राप्त कर चुके हैं। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, सफल होते हुए नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन भाग्यशाली रहे कि कैच वहां पर छोड़ चुके थे फील्डर जो मिड विकेट पर मौजूद थे। एक रन का इजाफा, 26 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 2 रन्स टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और धनुष इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज नागराज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फ्लाइट एट, उछाला, मिड विकेट पर इनटू द गैप, एक रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण यहां पर कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री रजिस्टर्ड बाय टीम एनजेएस defeating Udupi Tigers and with this victory they registered the second victory in this tournament. तो अब 4 मैचेस दोनों टीमें खेले हैं, उडुपी टाइगर्स और टीम एनजेएस। दोनों टीमों ने 2 विजय दर्ज किए हैं, जबकि 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 4 अंक दोनों के भी पास हैं। और देखना यह है कि आगे के मैचेस में कौन सा फलितांश यहाँ पर होता है और कौन लीग राउंड रॉबिन लीग स्टेज समाप्त होने के बाद कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर मैच नंबर 12 की समाप्ति हो चुकी है और टीम एनजेएस परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है इस मैच में विजय दर्ज करने के बाद उडुपी टाइगर्स के खिलाफ। तो अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा, मैच नंबर 13 मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और वो मैच शुरू होगा एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you very much, Gopi. So welcome back. I request the extra player from Shetty Warriors, please report here in the community box immediately. Shetty Warriors captain, please send your extra players towards the commentary box immediately. So captain of KSK won the toss, selected to field first. And Kamath Super King, they're playing the fourth match of the league, and they lost all 3 matches of the league. And they're playing their 4th match, and desperately they wanted to win this match. As well as the Shetty Warriors are looking pretty good in this particular tournament. Even they lost the toss, but asked by the opposition to bat first here. I request the 12th man of extra players of Shetty Warriors. Please report here. Two opening batters are came into middle. Krishna is in non-strikers, and then Malesh, experienced campaigner, is in strikers, and the post over of the power play. And wait and see how well these two opening batters will go in to give the start here. In IPL, CSK scored 131 runs after completion of 20 overs by losing 5 wickets. And the highest run getter, MS Dhoni, once again scored first 50 of this IPL in just 38 deliveries with the help of 7 boundaries and 1 6. Then the new captain of CSK, Ravindra Jadeja, scored 26 runs in just 28 deliveries. And next highest scorer is Robin Uthappa, scored 28 runs in 21 deliveries. And 132 target for the runner-up of the previous edition of IPL. Coming back to this KVS Premier League, the first ball and the first delivery itself, the batter able to pick the single. The umpire is now referring for the third umpire for the run out. The first ball is opportunity for Kamath Super Kings to get the wicket, but for that they need to wait for the decision from the third umpire. And in the third umpire, of course, we have Atmaram. We're going to refer the replay from the technicians of M9 Sports to see that whether it's out or not out. It's a not out, and rightly so, because the ball is not in the hands of a wicket keeper, and that's why the right call from umpire Atmaram, rightly so. The field umpire Rajeshwar knows that it was a very close call, but he wants to see that whether the ball is touched the stumps or not. But ball is not really touched the stumps, but the hands of wicket keeper touched the stump. That's why no problem whatsoever. The first run came here for Shetty Warriors, and now Krishna facing next delivery of the Ketan. This time whip that one. Ball is in there for a while, but is out of the reach of the fieldsman, and the square leg region. He's run hard towards his back to collect that one, but ample time here for the batters to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Again, Kirtan bowls, beautifully bowled, and again that was extra bounce, forcing the batsman onto the back foot. And Krishna maybe was looking for the cut shot, but quickly realizing that that not that much of width enough to play the cut shot. Then he played that one defensively back to bowler, and there is no possibility of any run at all. Krishna with a short run off, with the bowling action of Jasprit Bumrah. And again, he tried to york that one, but it was a low full toss, and Krishna drives that one down to mid-wicket region for a easy single.
And with that single, Krishna is off the mark as well. With that single, scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Malesh back on strike now, facing the next delivery from Kirtan. This time he lofted over the top of the infield, down to deep extra coverage, and fielder chasing the ball, three fielder behind the ball, and just a couple of yards before that boundary line, the one fielder able to cut it off, and here is the batters completed a very valuable couple of runs as well. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket. The over number first in progress. Again, Kirtan right arm over the wicket delivers down the leg stump, going to be a wide and outside the line of leg stump too far. Maybe the bowler looking for the in-swing delivery, but line is not that much of enough. And that ball is outside the line of leg stump and going further away. One more addition to total with the addition of that single, scoreboard moves on to 7 for without loss of any wicket. This time he lofted, but I think he's not really getting that one middle of the bat. In fact, he able to clear that infield, but not able to clear the boundary line in that occasion. Got a couple of runs anyhow, and with that couple of runs, scoreboard now moves on to 9 on the board without loss of any wicket. The very good start, a decent start from the opening batters of Shetty Warriors, able to get 9 valuable runs in the first over. For the latecomers, you're watching KVC Premier League, day number 1, running very successfully. Day and night cricket tournament in this most beautiful UCG cricket ground. The which cricket tournament is organized for chartered accountants as well as the students. So wonderful opportunities created to showcase the talents of chartered accountants as well as the students. It's edition 3 of this cricket tournament. KVC Academy organizing this wonderful cricket tournament. First time in this cricket ground, UCG cricket ground. The 7 teams participating in this particular cricket tournament. Round robin league matches. Each team gets 6 matches in their league. And from the far end is the start of the over number 2. The bowler from the far end, Anup to Krishna. Anup seaming in from the far end. Right arm over the wicket. Short pitch delivery, but a little bit early into that stroke there from Krishna. Not really reading that short pitch delivery. The short pitch, of course, but it's a slow short pitch delivery. Seeing the run-off of the bowler, looks like that ball is coming very quickly to the bat, but it's a slow short pitch delivery outside the line of off stump, and early into the strokes, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Went for the reverse sweep, and he got that one right from the middle of the bat. Ball running down to deep, extra cover boundary for 4 runs. And unorthodox, absolutely unorthodox kind of cricketing stroke. That was a ball, it came in a puller length delivery, low full toss. And already Krishna made his mind he will going to play the switch it. But he managed to got that one right from the middle of the bat. Not quite intended, he wanted to play that one down to deep backward point region. But ball went towards the deep extra cover region for a boundary here, welcome boundary. Chipped that one, half-hearted stroke, and ball landed very safely just over the top of mid-wicket region before the fielder from mid-on to run across to his right. And Krishna managed to complete the single. So with that single, scoreboard now moves on to 14 on the board without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Anup from the far end. Right arm over the wicket, going for the cut shot, missed it completely. Good delivery indeed from Anup. Of course, maybe that was a little bit short pitch delivery, but batter a little bit late to react that cut shot. Everything is perfect to play the cut shot, but the fact that ball is maybe kept a little bit low at the time of batter went for the cut shot, so that he missed it completely from his bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Anup again from the far end. Right arm over the wicket, looking for the blind stroke without seeing the line of the delivery. It's not that much of short enough to go for the lofted drive. And straight away Krishna coming to his partner to have some word
because they got already one boundary in this particular over. Thus, they got score what they really wanted in this over, but two dotted deliveries from Anup. It just nicely turns that one down to square leg region, a little bit shuffled across the line of the delivery, just allow the ball to coming into his bat. Wrist work comes into play to pick the single. So with that single, scoreboard now moves on to 15 without loss of any wicket after completion of over number 2. So first out of the 2 power play, certainly the Shetty Warriors managed to get 15 runs. I think it's a good score in this condition under floodlight. 7.5 runs per over is always going to be a good score. And wait and see, having all the wickets in hand, maybe they're looking for some acceleration of run rate as well in the remaining 4 overs. 24 deliveries remaining in their innings, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs they will going to get. Krishna is still there in the middle, and his partner Malesh is in strikers end. Ristan is the bowler, and again the half-hearted push, chance of run out, direct hit. Certainly the chance of run out, but the fielder at mid-off missed the stumps completely at non-strikers end, and Malesh just survived from that run out. Not a drive, not a push in the negation there from Malesh. Just wanted to reach the pitch of the delivery, but by doing that is the half-hearted push down to short mid-off to pick the single. 16 without loss of any wicket. Beautifully bowled, perfect delivery, absolutely good one in the negation. Not that much of deviation, but the line is so good in the negation. And pitching the ball in a good length spot, and got a little bit shaping away from the right-hander batsman. This time he went for the reverse sweep. Again he missed it completely. Trying and trying, but Krishna is not really settling the batsman for any kind of big strokes in this particular over. The kind of over which is required for KSK. They lost 3 matches. They desperately wanted to open the account in the points table. They need to work hard in all the departments. Ristan bowls a full toss delivery, pulls that one down to deep backward square leg region. And before that, fielder from deep mid wicket run across to field that one. Ample time for Malesh to get a couple of runs here. Not an easy full toss to put any kind of pull shot. It is a little bit difficult full toss to play a pull shot. Malesh got a couple of runs for that. 17 without loss of any. Again the full toss delivery. This time the one bounce collected by the deep square leg fielder in the negation. A lucky escape here for the bowler, because that was a juicy full toss, but Malesh couldn't manage to take that one over the top of deep backward square leg, but he's just played it in a flatter version. And that's why that ball is traveled after one bounce collected by the deep backward square leg fielder. 18 without loss of any wicket. This turn away from us, right arm over the wicket, shuffled across the line of the delivery. Krishna not happy with himself, but it's a very good over there from Ristan. That's the kind of over which is required for KSK. So after completion of over number 3, the first better over bowled by the bowler, the Ristan in the delegation bowled a fantastic economical over, and 18 without loss of any wicket. And wait to see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. Shetty Warriors, maybe they're looking score around, if the similar run rate projected score is 36, and I think they definitely wanted more than that. And wait and see, having all the wickets in hand, and wait and see the strategy and game plan from these 2 batters to get some good score here. Change in commentary box as well. Once again I invite Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। तो 18 रन बन चुके 3 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। और पिछला ओवर अगर
कामत सुपर किंग्स की ओर से देखा जाए तो बेहतर ओवर रहा, जिसमें सिर्फ 3 रन गेंदबाज ने प्रदान किए और 3 ओवर के बाद इस वक्त स्कोर है 18 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और कार्तिक गेंदबाजी शुरू करते हुए और मल्लेश सामना करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की और गेंद और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड की इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और शेट्टी वॉरियर्स जिन्होंने अपने पिछले मैच में बेहतर प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहां पर उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश में। और इस बीच धीमी गति की गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 20 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज धीमी गति की गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर ऑफ ब्रेक गेंद थी, गेंद पर तेज तरीके की विकेट कीपिंग विकेट कीपर ने की है और अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर की मदद इस वक्त मांगी है। और देखना यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे, बिल से चटकाए गए थे, तब यहाँ पर बल्लेबाज का पैर क्रीज से बाहर था या अंदर था। और तृतीय अंपायर इस वक्त इस डिसीजन का परिशीलन यहां पर करते हुए तो जहां तक सवाल है, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 मैच नंबर 13 इस श्रृंखला का यहां पर प्रगति पर इस देर रात में रात के 9:35 यहां पर बच चुके हैं और इस श्रृंखला के पहले दिन के 13वें मैच में यहां पर मुकाबला जारी है कामत सुपर किंग्स और शेट्टी वॉरियर्स के बीच। और जहां तक और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट हम इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो M9 स्पोर्ट्स के सदस्य यहां पर कर रहे हैं। और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई, फ्लडलाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी तले ये श्रृंखला यहां पर आगे बढ़ती हुई। और इस बीच देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और यहां पर अपील को नकार दिया है और बल्लेबाज इनसेफ और क्रीज पर उनका पैर मौजूद था, तब विकेट कीपर द्वारा उखाड़े गए थे। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, बेहतर ऑफ कटर गेंद, टॉस की गई थी, फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज को ललचाया था कि आक्रामक स्ट्रोक वो खेले, लेकिन यहां पर गेंद को बल्ले पर लेने में असफल और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर द्वारा लपक ली गई है। अपील जरूर, लेकिन बल्ले बैट और गेंद का कोई संपर्क यहां पर नहीं और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 20 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। एक बेहतर लेग तोड़ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। और कार्तिक का अगली गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेलना चाहा, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, फील्डर ने निशाना दागा इस वक्त और निशाना चूकता हुआ ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप होता हुआ इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 21 रन, सिर्फ 3 रन अब तक इस ओवर में प्रदान कर चुके गेंदबाज कार्तिक। अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंचती हुई डीप कवर पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक और बेहतर ओवर अगर कामत सुपर किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है। सिर्फ 4 रन इस ओवर में गेंदबाज कार्तिक ने प्रदान किया। अंतिम 2 ओवर में बेहतर कमबैक कामत सुपर किंग्स के गेंदबाज यहां पर कर चुके हैं, सिर्फ 7 रन प्रदान कर चुके हैं और यहां पर रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज शेट्टी वॉरियर्स के। तो 3 मैच कामत सुपर किंग्स ने खेले हैं और तीनों मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है। और यहां पर जहां तक अगर उन्हें अस्तित्व इस श्रृंखला में अपना बचाना है, तो इस बचे हुए 3 जो मैचेस है, इस मैच को कुल मिलाकर
3 मैचेस उन्हें खेलने हैं और उन तीनों मैचेस में उन्हें विजय दर्ज करने होंगे अगर इस श्रृंखला में उन्हें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो यहाँ पर अगर इस मैच में भी कामत सुपर किंग्स को पराभव का सामना करना पड़ता है तो लगभग वो श्रृंखला से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर विजय के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त करते हुए उनके गेंदबाज एक सीधी और सदी गेंदबाजी इस वक्त वो यहाँ पर रख करते हुए तो जहां तक शेट्टी वॉरियर्स का सवाल है उनका तद्विरुद्ध स्थिति जो कामत सुपर किंग्स की स्थिति है उससे तद्विरुद्ध स्थिति इस वक्त शेट्टी वॉरियर्स की है। 3 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें से 2 मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया है और सिर्फ 1 मैच में उन्हें विजय का पराभव का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर 4 अंक उनके पास हैं और अंक तालिका में अगर अंकों का खाता खोलना है तो कामत सुपर किंग्स को यहां पर विजय इस मैच में दर्ज करनी है इस श्रृंखला में अपने अस्तित्व बरकरार रखने के लिए। तो इसलिए यह मैच शेट्टी वॉरियर्स से भी ज्यादा कामत सुपर किंग्स के लिए जरूरी है। डू और डाई सिचुएशन इस वक्त उनके लिए। पहली गेंद ये गेंद और इस बार स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराया और गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराया। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। मल्लेश की पारी समाप्त और पहला विकेट यहां पर खो चुका है शेट्टी वॉरियर्स 22 रनों के योग पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अब स्वयं कप्तान का आगमन होता हुआ राम गणेश coming to the crease as a number 3 batsman for Shetty Warriors और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज एशलिन की गेंदों का। तो एशलिन एक लंबे रनअप के जरिए इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए राम गणेश अंपायर से इस वक्त गार्ड लेते हुए और अपने दोनों हाथों को जमीन पर लगाने के बाद इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हुए और अब सामना करने के लिए तैयार एशलिन की गेंदों का। एशलिन दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए राम गणेश के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, खेल भी दिया और गैप भी चुनते हुए इस वक्त 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। विद ट्विस्टेड बैट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके। गली फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला था और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से एशलिन इस बार फील्डिंग में जमावट करते हुए पॉइंट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा सीधा तैनात किया गया है कवर पॉइंट पर और लॉन्ग ऑन फील्डर कुछ हद तक पीछे इस वक्त जाते हुए डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद ऑन साइड पर ठीक सीमा रेखा के पास और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, सफल होते हुए नहीं उछाल पाए। गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं और गेंद वहीं पर गिर गई। स्वयं गेंदबाज ने आगे की ओर आकर गेंद को कलेक्ट कर लिया। तो एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कामत सुपर किंग्स के और बल्लेबाज शेट्टी वॉरियर्स के लिए शेट्टी वॉरियर्स के इस वक्त रनों के लिए जूझते हुए और एक बार फिर से एशलिन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए मैच नंबर 13 का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर और यहां पर गेंदबाज एशलिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। क्रीज के कोने से गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि पूरी तरह रिलैक्स से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर एशलिन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राम गणेश जो कि स्वयं कप्तान है शेट्टी वॉरियर्स के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एशलिन की गेंदों का दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार कोई दिक्कत ही उन्हें महसूस नहीं हुई अंतिम क्षण में रन पूरा करने में और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
26 in fact, for the loss of 1 wicket now in the over number 5 in progress in their innings. और एशलिन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार कृष्णा सामना करने के लिए तैयार। एशलिन ये गेंद उछाला लेकिन टॉप एज, स्वयं गेंदबाज के लिए मौका, फॉलो थ्रू में और इस कैच को छोड़ चुके हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रयत्न में भी गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद यहां पर उनके हाथों से छूट चुकी है। आसान सा मौका वो गंवाते हुए और बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। तो यहां पर रन तो कोई नहीं मिला लेकिन विकेट जरूर बचा बल्लेबाज का और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह आसान सा कैच था। बल्लेबाज ने जो गेंद को उछाला था, फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पास काफी समय था कि इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपक सके, लेकिन आखिरी मौके पर वो गेंद को लपक नहीं पाए और आखिरकार ये विकेट नंबर 2 गिरने से यहां पर बच चुका है शेटी वॉरियर्स के लिए। अंतिम ओवर का खेल बाकी और गेंदबाज कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। तो कार्तिक कामत सुपर किंग्स के कप्तान और स्ट्राइकर एंड पर राम गणेश जो कि शेट्टी वॉरियर्स के कप्तान। तो कप्तान के लिए इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में यहां पर जमावट करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतरीन इस बार, दिस इज अ मैसिव वन एंड इट्स गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ बिगी। 6 रनों के लिए इस वक्त उछाला, लगोन सीमा रेखा से बाहर। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर 6 रन्स। तो राम गणेश के खाते में छक्का यहां पर जुड़ चुका है। अगली गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, इस बार मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची डीप इन विकेट पर। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 8 रन पहले 2 गेंदों पर बटोर चुके हैं राममोहन। और इस बीच ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। एक बार फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था इससे पहले कि वो 2 रन प्राप्त कर सके। तो एक बेहतर ओवर यहां पर साबित होता हुआ। और जहां तक सवाल है गेंदबाज कार्तिक का, तो कार्तिक इस वक्त इस ओवर में काफी हद तक महंगे साबित हो चुके हैं। 10 रन पहले 3 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं और राम गणेश इस वक्त एक आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते हुए इस अंतिम ओवर में। और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद, टॉप एज, मौका लेकिन फील्डर काफी पीछे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बार फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं और दौड़ पड़े लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर वहां पर विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। और आउट होने वाले बल्लेबाज कृष्णा रन आउट के रूप में, तो 1 रन उनके खाते में जुड़ेगा और 1 विकेट भी यहां पर गिर चुका है। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट विद जस्ट नाउ कपल ऑफ बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर रिंग। सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। So 37 for the loss of 2 wickets और गेंदबाज कार्तिक अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। 1 more 6 in this over came from the bat of राम गणेश और छक्का नंबर 2 वो झड़ते हुए और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। तो 17 रन अब तक बन चुके हैं इस ओवर में। यह गेंद ऑन साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। 2 रन मिलेगा जरूर और 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर यहां पर अगर शेट्टी वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 17 रन बने, 17 रन स्कोर्ड इन द लास्ट ओवर। और जहां तक सवाल है लक्ष्य का, तो 46 द टारगेट नाउ सेट बाय कामत set by Shetty Warriors for Kamat Super Kings. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over they have to score for victory. 46 they have to score. और देखना यह है कि
कामत सुपर किंग्स के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर चंद लम्हों बाद होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब कामत सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಗೆಲ್ಲಲು 36 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 46 ರನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ನುಡಿಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಸಪದಂತೆ ಮನೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಜಯದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞರು. ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್, 3 2D, 1 ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲಲು 46 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರಾಜರತ್ನ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಈ ಬಾರಿ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಒಡಿಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ದಾಟಿ ದುರ್ಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಸ್ವತಃ ಬೌಲರ್ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ಕೆವಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆವಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಖಾತೆ ಆರಂಭ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ಇತರರಿಗೆ ಖಾತೆ 1, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1, ಯಾವುದೇ ಉದರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಬಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಪ್ ವೇವ್ಸ್, ವಿಜಯ್, ರೀಮ್, ಸಿಟಿ ಅರೇನಾ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರುವಾಲಿಯಾ, ಸಾಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು, ಲೋಕೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಂಸಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿಸಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ 7 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕೊಚ್ಚಿಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿದ್ರು ಸುಭಾಷ್ ಅವರನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಖಾತೆಗೆ 1, ತಂಡಕ್ಕೆ 1, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 7 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, SAC ವೇವ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ ಆಬಿದ್ ಅಲಿ, AR ಟೈಟನ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಸಿ ಎ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್, ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ KS ಕಾಮತ್, ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, NJS ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ ನಿತಿನ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ತಂಡವಾದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಎ ರಾಧಿಕಾ ಭಟ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಹೌದು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡಿನ ಫಲವಾಗಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗಣೇಶ್ KSK ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕೋ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಡಿದ ಗಣೇಶ್ 7 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ 5 ರನ್ನಿಗೆ 1 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿ ಎ ಜೇಸನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ರವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ SAC ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SAC ವೇವ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯ ದರ್ಬಾರಿ ಸಿ ಎ ಸುನೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಾದಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯರ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್. ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತ, ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರವಿರವರು. ಬಂತಡೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾರಿ ಪುಲ್ಟಾಸಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ
ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. 2 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 8-1 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 46-47ರ ಮೊತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ. ಐವತ್ತರ ಒಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವಾದರೂ ಅದು ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 60 ರನ್ನನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಟಿತದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 9. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 69 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯರ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಗಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, 2 ಅಂಕೆ ಪ್ರವೇಶ 10. The score moves on to 10 for the loss of 1 wicket. Second over in progress. We have Durga Prasad on strike. At the same time, Pradeep Naik with all his preparations crossing over. Umpire to ball to Durga Prasad. This time completely misjudging the ball. Wicket keeper collecting it very safely. With that dotted delivery as a completion of second over. The score moves on to 10 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. The new bowler coming for the bowling is the best figures is been taken by him. He is the one who has bowled the maiden over here in this KBC Premier League. He has bowled 2 maidens. That's what we are getting the information. A good bowler for the Shetty Warriors. Has bowled a splendid spell till now for Shetty Warriors. Just not in the bowling, he has been a good game changer in the batting too for the Shetty Warriors. We have Ganesh Shetty, the game changer of Kamat Super Kings. At the same time, Ram Ganesh bowling his first and the innings third over. Ram Ganesh to Ganesh Shetty. This time trying for a big, completely missed. Departs. Ganesh has been anger on his side for that performance. The new batsman entering the ground is Kirtan. I request players to come to the crease as soon as possible. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 2-3 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸಿದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದುರ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್. ನಕಾರ. ಕೀರ್ತನ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆಟ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 46 ರನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಈವರೆಗೆ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ರನ್ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12, 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಟು ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರಿಂದ ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಟು ದುರ್ಗಾ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಕೆಳಂಚನ ಸವರಿದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರಿ ಬೀಳುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಆ ಒಂದು ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14, 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 36 ರನ್ನ ಗುರಿ. ಭಾರಿ ಪುಟಿದದ್ದ ಚೆಂಡು 2 ರನ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 16, 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. The completion of 3 overs, the score moves on to 16 for the loss of 2 wicket. And the new bowler bowling is ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ರವಿ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ದಾಟಿ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಕೂಟದಿಂದ ತೀರ ಆಚೆ ಹೋದ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಗಲವಾದ ತೀರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಆ ಇತರ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಂದಗತಿಯ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಲು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾಲಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ನೇರ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದ ಫಲವಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 16 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗುರಿ. ಸರಾಸರಿ 10 ಚುಕ್ಕಿ 6, 8 ಅಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ದಾಟಿ ದುರ್ಗರವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್. ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಮೈದಾನದ ನಿರ್ಗಮನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಜೇಸನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವೀಂದ್ರ ಟು ಕೀರ್ತನ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 2 ರನ್ನನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ರನ್ ಮಕ್ಕೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂದ ಮೊತ್ತ 19. 3 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗುರಿ. ಸರಾಸರಿ 12.46 ರನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕೀರ್ತನ್ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ನರ್ತನದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಮಲ್ಲೇಶ್. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. 13.50 ಅಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗುರಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 27 ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಡೆಲಿವರಿ ಎಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 13.50 for Kamat Super Kings to win this match. At the same time, Shetty Warriors want to bowl dotted deliveries and restrict them to the lower score than what they have scored to win this match. AR ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ SAC ವೇವ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ CA ಸುನಿಲ್ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯತ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂತ CA ಜೇಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಡಬಡಿ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡುವ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈವರೆಗೂ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳದ ನಿತಿನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡುವ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಈ ಬಾರಿ ಕೀರ್ತನ್ ರವರನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅನೂಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅನೂಪ್ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮನ ಮನುಕುಮಾರ್ ರವರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ KBC ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೂಪ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಟು ಅನೂಪ್. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಫಲರಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ಎಂಟು ಎಸೆತ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಸರಾಸರಿ 20 ರನ್ ರನ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಬಂದ ಪುಟ ಹೋದ ಪುಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅನೂಪ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಫೇಲಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು
ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಟು ನಿತಿನ್. ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೋಟ ರಕ್ಷಕನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ್ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಮಡಿಕೇರಿ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡುವ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಂಥ್ ಟು ದೇವ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದೇವ್. ಗ್ರಂಥ್ ಓಡಿ ಬಂದ ದಾಟಿ ದೇವರವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರವೀಂದ್ರರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಿರುಗಮಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ CA ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಗಿ. ನಿತಿನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಲ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು ನಿತಿನ್. ಗ್ರಂಥ್ ಟು ನಿತಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸದೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4 ರನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲ. 2 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಗ್ರಂಥ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬದಲಾದ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಂತಡೆಷ್ಟಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್.
So welcome back for the 13th match of the day number 1. I request the extra player from AS Strikers as well as Air Titans, little correction. The extra players from Air Titans as well as SAC Waves, please report here immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ SAC Waves ಹಾಗೂ Air Titans ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Captain, please send your extra players towards the commentary box immediately. Extra players of Air Titans and SAC Waves, please report here. Air Titans extra players. So SAC won the toss, selected to field first. So Akif will going to start the proceedings from the commentary box end. Umpire Atmaram signaling towards our scorer Ketan. So left-hand batter is on strike now. The first ball kept a little bit low, and that's why the batter completely missed out that delivery. Of course, that was a good line delivery, but at the same time, that ball is kept a little bit low, a little bit shaping away from the left-hander batter outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. Akif is a very good starter, always bowls in power play overs. Right above, beautifully bowled. That was a fantastic one. This time I think nothing that much wrong with that line and length. That ball is almost beating the outside edge of the bat of the left-hand batters. Tried to chase that one, tried to reach that one off the front foot. But again, because of a lot of dust in the pitch, ball little bit skidding and a little bit coming late to the bat. And wicketkeeper behind the stump this time did the rest. And there is no possibility of any run. Again, next delivery went for the reverse sweep. Ball is in there, straight to the hands of mid-on fielder. Ayub's the fieldsman there in the short mid-on, making no mistake at all. Prashant is back into pavilion. Of course, a little bit feeling under pressure after that. Two back-to-back daughter deliveries. He wanted to break the shackle, and by doing that, he wanted to play unorthodox cricketing stroke. That is a switch it is attempted. But Akif is a bowler, not really settle the batter for that switch it. And he just went with the stroke, pays the penalty for that, and mid-on fielder making no mistake at all. Prashant back into pavilion. And the Titans lost their first wicket. Pulls that one again, the opportunity for the square leg fielder this time. Its ball is cast. Oh my goodness, misjudgment. The misjudgment that by the square leg fielder. It runs back, try to take the catch, and always it is a difficult catch when you are running back and try to take the catch. You need to keep the eye on the ball. At the same time, you need to control your run as well, the speed of your run towards the back. And that time ball is just going away from that fielder, falling short of that fielder. Falling away from that fielder, so that couple of runs here for the batter. And with that couple of runs, scoreboard now open. Account is open with a couple of runs. Again, a lovely delivery, extra bounce as well here for Akif there.
just hitting the deck hard and get some extra bounce. And the batters completely missed out that delivery. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. 2 for the loss of 1 wicket. So far, it's a very good over there from Akif. For SAC Waves, so far they got a very good tournament. Right arm over the wicket, beautifully ball. One more very good delivery just following the batter. Sharp incoming delivery. So very good over there from the bowler Akif. First over completed after winning the toss, selected to field first. And Akif just justifying that decision of their captain. Just 2 runs from that over for the loss of 1 wicket. Air Titans all got a very slow and shackling start. 2 for the loss of 1 wicket. Tanai is on strike now, looking for the big shot, and not quite going to hold up that one properly. Chance of run out there, but this time the batsman quit so quick to get past towards strikers end. So one more addition to total with the addition of that single. Scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Ashwath from the far end. Right arm over the wicket from the far end. Delivers. Chetan missed out that full toss delivery. Absolutely, it was a juicy full toss. But Chetan a little bit early into that stroke. Missed it completely from his bat. Lucky escape here for the bowler. And there is no possibility of any run at all. 3 for the loss of 1 wicket. From the far end. Second time in this over, went for the reverse save. Ball straight to the hands of fielder. Chance of run out. A direct hit required, and it's a direct hit. And Tanmay is short of his crease. A fantastic piece of throw coming from the fielder at short third man region. Directly hitting the off stump. Directly hitting the stumps, and the batsman well short of his crease. No hesitation from squad umpire Atmaram to raise his finger. Wicket number 2 is back into pavilion, and the Air Titans are deep in trouble now. 3 for the loss of 2 wicket. So new batsman is the left-hander. Karun Sagar cuts that one quite nicely between the backward point and cow point region. The fielder chasing the ball, and before that one fielder reached that one down at deep cow point region, and ample time for Sagar to capture a couple of runs here. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 5 on the board for the loss of 2 wicket. Karun Sagar facing next delivery. This time again a short pitch delivery, well directed short pitch one. Again a lovely piece of bowling,
Even that was short pitch delivery, but not that much of easy short pitch delivery for any batters to pull that one. The direction of the line is so good. Outside the line of half stump. And he wanted to climb that one to get that one, but again that ball is going away from the right and left hand batter. And there is no possibility of any run at all. 5 for the loss of 2 wicket. Full toss, pulls that one, ball high up in there. The two fielders behind the ball landed. The one fielder, I think Sunil, the fielder there in the short cow point region, short mid-wicket region in fact, he drops the catch. And Karun Sagar has got a life here. What could be a certain catch here? Easy catch, but a little bit urgency shown there by Sunil to take the catch. Just removes his eye on the ball. And so that he drops the catch. So 2 overs completed. Completion of over 2. Searching for the right track. Air Titans are struggling in the middle. 6 for the loss of 2 wicket. Samsheer got a ball in his hand. He will go to ball 3rd over of the innings of their opposition Air Titans. Karun Sagar is on strike. Prashant is in non-strike again. The 4 overs remaining in their innings. There is a short gully. One fielder now going back to deep cover point region. After that power play, we can see that so many bodies out there in the deep. One at deep extra cover, one at deep long off. Deep long on, deep mid wicket, deep backward square leg. The fine leg inside the ring. And one at short extra cover. And inside the ring, one at short fine leg, one at short square leg. Little bit correction, short backward point for the left hand batters, in fact. And again, nicely push that one down to backward point region for easy single by Karun Sagar. Addition of that single scoreboard moves on to 7 for the loss of 2 wicket. Shamshed is a very good bowler for the side of ACC Waves. Out of 3 matches of the league previous, they won 2 matches, lost 1 matches. So level of competition is going to be very high to get the place in the playoff round of this prestigious KVC Premier League 2022. And latest about disappointment performance from KSK. And they lost all 4 matches of the league out of 6. Shamshed delivers. Beautifully ball. Absolutely perfect one. And Prashant this time he wanted to play the reverse sweep and missed it completely from his bat. And there is no addition for any run. 7 for the loss of 2 wicket. Very slow going here for Titans. Shamshed again away from us with a short run up. Right, I'm over the wicket. Short pitch delivery, lofted, but fielder there in the deep mid wicket region. This time he's not making a mistake. Sudesh Malya out there in the deep mid wicket region. Just kept eye on the ball. And it takes a comfortable catch in the end. So wicket number 3 is back into pavilion. 7 for the loss of 3 wicket. AR Titans are deep in trouble. Atishay is the new batter, is a non-striker Zan. Replacing Prashant is back on the pavilion, try to pull that one. Not that much of easy short pitch delivery to pull that one, and he pays the penalty for that. Again, look at the bounce, absolutely perfect area from Shamshed. The extra bounce is just getting some encouragement from the pitch and even the hardness of the ball. And because of that extra bounce, the batter Karun Sagar completely missed out. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, the short pitch delivery. This time he is clearing the infield down to deep fine like boundary for 4 runs. Quick outfield.
Here in UCG cricket ground, once you beat the infield, little bit shortest part of the ground, down at the deep fine leg region, Karun Sagar is got this time. He got a very good short pitch delivery in a good height, so that he can pull that one down to fine leg, deep fine leg boundary for 4 runs. Welcome boundary here for Air Titans. With that boundary, scoreboard moves on to 11 for the loss of 3 wicket. Maybe Shamshid is looking for one more short pitch delivery so that he can beat the bat, but I think the line is not good in that occasion. And now he's wanted to change his angle, coming round the wicket now to the left-hander batter, Shamshid. Delivers full toss and it drives that one down to the mid-wicket region, but protection there in the deep. Just a single here for Karun Sagar. With that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Shamshid now need to change his angle because right-hand batter is on strike now. Just shuffled across the line of the delivery, deflected from the leg of the batter. Excellent over there from Shamshid. So 3 very good overs bowled there by SAC Waves, and searching for the right track, still struggling Air Titans. They're 12 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed, 3 overs remaining. And before the next over going to start, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। तो 18 रन 12 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए एआर टाइटंस के बल्लेबाज, और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खेल दिया, शफल होते हुए गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है, और आमतौर पर रात होने के बाद उर्वा क्रिकेट मैदान पर हवा का रुख काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और इस कंडीशन का, इस परिस्थिति का लाभ आमतौर पर गेंदबाज उठाया करते हैं, और यहाँ पर इस मैच में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का फ़ायदा इन परिस्थिति का यहाँ पर गेंदबाज उठा रहे हैं। सिर्फ 13 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं, जबकि चौथा ओवर इस वक्त एआर टाइटंस की पारी का यहां पर प्रगति पर। और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अकीफ एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, और अतिशय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और एक लंबे रनअप के जरिए आकिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट द लास्ट मोमेंट। बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 14 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए, और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार करुणा सागर, और आकिफ की गेंद फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। 1 रन मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, और अंतिम क्षण में इससे पहले कि बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर वापस लौटे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप मिड विकेट फील्डर का विकेट कीपर के हाथ में, और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए।
गेंद के जरिए और यहाँ पर चौथा विकेट गिर चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। इस श्रृंखला का मैच नंबर 14 यहाँ पर प्रगति पर केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत और यहाँ पर संघर्ष जारी है एआर टाइटंस और एसएसी वेव्स के बीच में। और जहाँ तक इस मैच के हालात के बारे में अगर कहा जाए तो इस वक्त एआर टाइटंस के बल्लेबाज रनों के लिए काफी हद तक संघर्ष यहां पर करते हुए एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज एसएसी वेव्स के और अगली गेंद आकिफ की ऑफ स्टंप पर आती हुई कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद चूंकि गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 15 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज आकिफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और फाइन निकल चुकी है इस वक्त विकेट कीपर को बीट करते हुए। डीप फाइन लेग पर जब तक दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे और इस बीच दूसरा रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं डाइविंग लगाते हुए। वाइड का इशारा 3 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज आकिफ। मैं समझता हूं गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी अंतिम क्षण में गेंदबाजी करते समय और स्पेक्ट्रा वाइड लेग स्टंप से बाहर उन्होंने फेंकी और 3 अतिरिक्त रन इस वक्त जुड़ चुके हैं एआर टाइटंस के खाते में। तो इन 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। आकिफ एक बार फिर से तैयार। ये गेंद पटके हुई गेंद उछालना चाहा गेंद उनके कंधों पर टकराई और जहां तक का सवाल है रनों का रन इस वक्त नहीं मिलेगा। कंधे पर टकरा करके निकल चुकी थी शॉर्ट कवर पर। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 6 रन इस ओवर में बने। 6 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा एआर टाइटंस द बैट्समैन ऑफ एआर टाइटंस स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और दिखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में एआर टाइटंस के बल्लेबाज अपने बचे हुए 6 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। सीरज गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद जबकि कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात और करुणा प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज की ओर की पहली गेंद का। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा सफल होते हुए पूरी तरह चूके और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। सीरज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा प्रसाद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और यह कैच यहां पर छूट चुका है। न सिर्फ कैच उन्होंने छोड़ा बल्कि चौका भी वो प्रदान कर चुके हैं। मिस जजमेंट और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज करुणा सागर प्राप्त कर चुके हैं। गेंद तक पहुंच गए थे अंतिम क्षण में गेंद को अपने हाथों में लपकने में असफल। मिस जजमेंट और चौका इस वक्त जुड़ चुका है एआर टाइटंस के खाते में और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन इस वक्त चाहिए वो किस तरह से बनते हैं ये इस वक्त जरूरी नहीं है एआर टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रन बनाने का हर तरीके का प्रयास हर तरीके की कोशिश वो यहां पर करते हुए ये गेंद इस बार सबसों पर टकराई। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहा था फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची पैरे पर टकरा कर गेंद निकली थी और रनों का कोई सवाल ही यहां पर पैदा नहीं होता है इस टूर्नामेंट इस श्रृंखला के नियम के अंतर्गत और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और सीरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार करुणा प्रसाद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट फुल टॉस फॉल किया है मिड विकेट पर लेकिन मैं समझता हूं वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर कैच छोड़ा है वहां पर कैच छूट चुका है
हमें यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स से ठीक से दिखाई नहीं दिया, जस्ट वी हैव टू लुक एट द रिप्ले। इस बार गेंद को उछाला था काफी ऊंचा, काफी उम्दा, और लंगोन पर जो फील्डर थे जी हाँ, इस कैच को वो छोड़ चुके हैं, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 24 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, और गेंदबाज सीरज की गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, लगभग नो बॉल का इशारा बीमर के तौर पर इस गेंद को फेंकी थी ऑफ स्टंप से बाहर, तो 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। 26 now for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress in their innings, और सीरज एक बार फिर से तैयार, फ्री हिट गेंद लेकर, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सौरभ जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली यहां पर करते हुए गेंदबाज सीरज, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, लंबे रन अप के जरिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद को उछाल दिया इस वक्त लंगोन की दिशा में, लेकिन काफी ऊंचा नहीं, और जब तक लंगोन फील्डर चंद टिप्पों बाद गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था 1 रन के साथ अपने छोड़ को बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस बीच गेंदबाज सीरज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, कदम का इस्तेमाल करते हुए आ गया है, गेंद को लॉन्ग ऑन पर उछाला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर करुणा प्रसाद का गिर चुका है। अश्वत्थ लॉन्ग ऑन फॉर फील्डर थे, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट यूजिंग हिज फीट, जस्ट ट्राइंग टू heave the ball over long on, it's not succeeded, not quite get that one right from the middle of the bat, और गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे अश्वत्थ, उनके द्वारा लपक ली गई, और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका 27 रनों के ऊपर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का समाप्त हो चुका। अब आखिरी ओवर बाकी उनकी पारी में, द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो सुदेश इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, और स्ट्राइक किस वक्त लेने के लिए तैयार नए बल्लेबाज फ्रेडविन यानी फ्रेडी, और इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई, सिर्फ 6 गेंदें बाकी अब एआर टाइटंस की पारी में, और गेंदबाज और टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए फील्डिंग के व्यूह के बारे में कि किस तरीके की फील्डिंग की सजावट इस वक्त करनी चाहिए, और बातचीत के बाद दोनों खिलाड़ी अपने अपने स्थानों पर जाते हुए, और गेंदबाज इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हैं। सुदेश फ्रेडविन सामना करने के लिए तैयार, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट, और 5 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी, और गेंदबाज सुदेश, ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद उनके लगभग पैरों के बीच से निकल गई, सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों के ऊपर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स, और सुदेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, सौरभ सामना करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, नाउ जस्ट 3 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, 3 गेंदें अब बाकी। फ्रेडविन स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं, और इन 3 गेंदों में करारे प्रहार लगाने की कोशिश में बल्लेबाज, और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद लगभग स्टंप्स के
ऊपर से होकर निकली इस वक्त विकेट कीपर चूके और बाई के रूप में यहाँ पर ये रन जुट चुका है और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और अब सिर्फ 2 गेंदें बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज सुदेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सौरभ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए सुदेश अगली गेंद लेकर तैयार तैनात ओवर द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली परफेक्ट वन बल्लेबाज के पिछले पैर पर बैक लेग पर गेंद टकराई और आखिरकार यहाँ पर मैं समझता हूँ गेंद उनके पैरों पर इसका डिफ्लेक्शन होता है आई थिंक सो और इस बीच एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बोर्ड इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज सुदेश बल्लेबाज फ्रेडी इस वक्त सौरभ इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी गेंद को इस वक्त स्टंप्स पर खींच लिया ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स और यहां पर अंतिम गेंद पर विकेट सौरभ का गिर चुका है और इसी के साथ पारी के निर्धारित ओवर्स समाप्त हो चुके हैं और टाइटंस अपने निर्धारित 6 ओवर समाप्त होने के बाद 31 रन वो जोड़ पाया और अब 32 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है एसएसी वेव्स के सामने और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है तो एग्जैक्टली 5.33 runs per over. The present run rate is now the required run rate for them at this situation. 32 they have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं क्या एसएसी वेव्स के बल्लेबाज इस 32 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं 32 the target for them in 6 overs. Their innings going to start within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब एसएसी वेव्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद So thank you very much. So SAC Waves got a target of 32 to win this match from Air Titans. The 5.33 runs per over is the required run rate, and from the far end, it's a
The bowler will go into starts the proceedings. Akif is a striker, the very good all-rounder for the side. Is opening bowler and opening batter for the side. Will go into face the first delivery from the far end. Bowler, right arm over the wicket, delivers. Full toss, nicely placed that one down to mid-off region. All on the stroke, they went for the single. So they opened the account. They started their journey. One without loss of any wicket. Uday Kiran will go into face next delivery. Freddy. Seaming in from the far end. Right now over the wicket he delivers. Beautifully bowled. Almost a well pitched up the delivery. It's a little bit lifting of delivery so that the batter Uday Kiran not quite able to get any kind of cricketing stroke. Just blocks the ball and not interested for the run because he knows that they're chasing a very small total of 32 to win the match. No need to panic at all. This time he going for the big shot. Lovely delivery there from Frederick. This time Uday Kiran shuffled across to whip that one down to mid-wicket region. But this time Frederick not really allow the batters to settle for any kind of big stroke. Frederick from the far end. Right above the wicket, delivers. Again that ball's going down the leg stump too far. Beats the wicket keeper as well. Wide call by umpire, 1+1. That means 2 wides added to total. And with that 2 extras, scoreboard moves on to 3 without loss of any wicket. They need to restrict all these extras if they wanted to win the match, Air Titans, because the condition is not that much of easy for the batter as well. If they bowl well, they can depend this total. From the far end, Freddy ball, the full toss delivery. That was a slow full toss. The ball is in there and mid. Oh my goodness, that was a combination catch. No ball call by umpire, so that. No question of getting out here because that was a beamer. High full toss over the waist level. Certainly the umpire called it a no ball. And even the effort from the fielder out deep extra cover and the mid-off fielder is gone in vain because of that no ball. Scoreboard numbers on to 4 on the board. Frederick delivers to Uday. Uday this time across the line off the delivery, swinging his bat but not getting that much of timing behind the stroke. But she still managed to rotate the strikes. That's very important in limited over matches. And with that rotation of strikes, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. 32 is the target. SAC Waves, they won 2 matches out of the 3. They wanted to finish the day with one more match, one more win. At the same time, Air Titans, they are also wanted to finish their the day number 1 with the victory. After this match, 1 match is remaining for the day. Again now, lovely delivery indeed. Little bit outside the line of off stump. The bails are off. I think he's bowled him. I don't know what really happened in this particular delivery. The bails are off. And the bails are off in the sense is the batsman is out. Because no question of the wicketkeeper having any hand, because wicketkeeper standing well away from the stumps, too far away from the stumps. Then only I think the ball is just kissing the stumps. I want to see it in the replay. Yes, it does. Ball is just kissing the bails. And yes, we can see that clearly. The bails are down. And that only because of one ball remaining this over. Look at that one replay. Absolutely, that ball's got a little bit of incoming delivery from Frederick, and that ball just kissed off stump. The bails are off. The first wicket is back into pavilion. 5 for the loss of 1 wicket. So much required. The good start for Air Titans. Needed such kind of wickets in each and every over
then only they can depend this total AR Titans. Predvik looking for one more wicket here. He is so far so good in this over. Bowling from the far end. Ashwath is a new batter facing next delivery. Predict final time in this over. Just like in the test matches, just allow the ball goes into the hands of wicket keeper. And you know exactly Ashwath that lost the wicket in the previous delivery, so that he wanted to play it defensively, but this time he's just left the ball into the hands of wicket keeper. So 5 runs came from that over, and Predict produced one very important breakthrough in this particular over. So chasing 32 to win this match. SAC waves a 5 for the loss of 1 wicket. That means the 5 deducted from 32, the 27 more runs required for the victory in remaining 30 deliveries. The 30 deliveries in the sense that the same jersey number 30 is brought into attack. Nilesh wearing jersey number 30, the same number of deliveries remaining in the innings of SAC Waves, and 27 runs required for the victory. Uday Kiran is on strike. Lovely delivery indeed. Straight away, he's on right on the money. The perfect line and length again from Ashwath. Just got that incoming delivery, in-swing delivery quite beautifully. It's a slower one, but very effectively bowled. Catching the batsman out on the back foot, and there is no possibility of any run. Ritu, right arm over the wicket ball. So Uday, again, lovely delivery indeed. Beautifully bowled. Again, the Uday Kiran shuffled across, tried to whip that one on the onside region, missed it completely, deflected from his legs, and one more dotted delivery. The good start in the second over as well from Nilesh. Nilu from the commentary box end, moving away from us. Right arm over the wicket, delivers. This time again, appeal for caught behind and is gone. It's a hit wicket. We can see that the wickets are not in a position, right position. That means the back foot of Uday is touched the stump. We can see in the replay, is going back and going back too much. Try to use the depthness of the crease. By doing that, his back foot touches the stumps, and unfortunate dismissal for Uday Kiran back into pavilion. That's so important to see that how far you are from the stumps. If you go back too much, all the chances of getting out in the form of hit wicket. And I think credit which goes to the bowler, because all the time is need to pushing the batsman onto the back foot with his excellent line and length. So 2 wickets back into pavilion, and the SAC Waves are in a little bit trouble now. Lost 2 wickets for just 5 runs. And this is over number 2 in progress. Nilu again. Right arm over the wicket, but delivers. Again, that was a fantastic delivery indeed. What a great piece of bowling there from Nilu. Just getting some encouragement from the closing fielders. That was what they really required, the body language. The fielders were standing inside the circle, 20-yard circle. The encouragement is definitely required. And Nilu just getting some excitement in his bowling as well. This time again, a lovely delivery. A lovely delivery indeed. Fantastic bowling performance. Shamsher is a very experienced batsman for the side of SAC Waves. Full toss, and oh my goodness, he's choosing the fielder. Can you believe this? A juicy full toss. Looks like quite deliberately bowled to Shamsher to hit that one down to mid-wicket region. They set a very good field set for that full toss delivery. The fielder there at the deep mid-wicket making no mistake at all. And Shamsher back into pavilion. Now all short of trouble now. SAC Waves 5 for the loss of 3 wickets. 6 for the loss of 3 wicket. Let me correction. Over completed. 2 overs completed. So 32 the depending.
Air Titans, and they're defending very well. But job is not yet over. The 2 over which is bowled by the 2 opening bowlers so well. Just 6 runs conceded at a rate of exactly 3 runs per over. That means now another 26 more runs required in remaining 24 deliveries. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. The pressure is mounting up now for the new batters. Every time when the new batters coming into the middle, and the conditions so good here for the fielding team. That's why they wanted the wickets in each and every over, so that they can put some pressure onto the batters of SAC Waves. So far so good from Air Titans, so no change in ball from the far end. Change in bowling, in fact. Saurav coming to ball here. Please switch off the headlight. There's a car there in the extra cover region. We're going to disturb the batters. Thank you very much. Ashwath is in Saigazan. Again, nicely turns that one down to deep backward square, like almost drags that one from outside the line of off time to pick the single down to deep mid wicket region. And with that single scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 3 wicket. Achyut is back on strike now. Saurav back to his bowling mark. The over number 3rd in progress. The first 2 over the power play is going in favor of Air Titans, and wait and see how well these 2 batters will going to deal with this remaining 4 overs. Saurabh drives balls, and this time shuffled across the line of the delivery. Picked up a single down to deep fine leg region by the batter Ashwath, and with that single scoreboard moves on to 8 for the loss of 3 wicket. Achitesh picked up a single. That means Ashwath back on strike. This partnership is much required here for SAC Waves. Little bit the consolidation is very much required. Sensible batting which takes SAC Waves to win this match. Saurabh, right arm round the wicket. He was hold him around the legs. He did the trick. Shuffled across the line of the delivery too much, just exposing all the stumps. Then Saurabh bowled a lovely slow Yorker length delivery, and he did the trick bowling around the legs of the batter. The ball hits the stumps. So wicket number 3 is back with the pavilion of SAC Waves. Here Titans are tighten up the screws here. Screws here. So M9 Sports having a live telecast of this wonderful cricket tournament, KVC Premier League 2022. Saurav, the successful bowler, the full toss nicely got that into the mid-wicket region for a single by the batsman, new batter. Siddiq off the strike after picking up a single in the very first delivery he faced. A 9 for the loss of a 4 wicket. Achyutesh is a batsman, loose stroke, and landed very safely just over the top of that extra cover fielder, and before the fielder from long off to run across to field that one. Ample time for Achyutesh to pick up a single. Loose stroke, not really control that one, tried to push that one, but push that one just over the top of that extra cover region. Luckily that ball didn't carry to the fielder. So with that couple of runs, scoreboard was on to 11 for the loss of 4 wicket. 21 more runs required for the victory. Over number 3 in progress. Saurav from the far end, right arm, round the wicket he balls. Sensible, absolutely sensible batting here from Achyutesh. You know exactly just the sensible batting required in the negation. Just rotation of strike is so important. You cannot underestimate the singles. Over completed umpire. So 3 overs completed after completion of over number 3, chasing 32 to win this match. 12 for the loss of 4 wicket. That means 20 runs required for the victory. In remaining 18 balls, the match is really inching towards a nail batting finish. It's going to be anybody's game. But so far I think Air Titans did a great job in the first 3 overs
to put some pressure by picking up wickets of their opposition SAC Waves. Now 18 balls remaining, 20 runs required for the victory. And Gopi, looks like in this midnight, this match is definitely going to wake up the spectators out here in this cricket ground, and even those who are watching live telecast of this cricket tournament. Looks to be this match is inching towards a nail-biting finish, isn't it? Exactly, Satish. There is no doubt about that. और निस्संदेह ये मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है और 18 गेंदों में 20 रन बनाने हैं। तो निस्संदेह यहाँ पर जो लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देख रहे होंगे उनके नींद को इस वक्त मैच का ये स्टेज है जो कि दौड़ा दिया होगा, नींद को भगा दिया होगा। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन 20 बनाने पहली गेंद थी ऑफ स्टंप पर आते हुए, और गेंद को स्टंप्स पर कवर करने के बाद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था चूंकि, और गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद सीधे फॉरवर्ड शॉट लेग पर फील्ड होते हुए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स वहीं पर रुक चुके हैं 12 पर। अगली गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंद, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, हालात का फायदा यहां पर उठाते हुए गेंदबाज। इस देर रात के हालात, हवा का रुख काफी हद तक कम हो चुका है और पिच से काफी हद तक मदद इस वक्त प्राप्त करते हुए गेंदबाज इस वक्त फुल टॉस, पुल किया और गेंद लगोन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। स्ट्रोक्स को खेला था, अगर सुबह का वक्त ये स्ट्रोक खेलते तो शायद छक्का उन्हें प्राप्त हो सकता था, क्योंकि सुबह का वक्त हवा का रुख काफी तेज होता है और यहाँ पर बिल्कुल धीमा हवा का रुख, हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा नहीं के बराबर है। और गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा लपक ली गई और इसी के साथ 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 13 for 5। SAC Waves are now looking deep in trouble। अब 19 रन चाहिए और कुल मिलाकर गेंदे इस वक्त बाकी हैं 15। 15 balls remaining and 19 more runs now they have to score for victory। सुनील का आगमन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त हो चुका है। अच्युतेश्वर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और हरिकृष्णन गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 5 विकेट के नुकसान पर उनकी पारी का चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, हरिकृष्णन लेग कटर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, इज गॉट इनसाइड एज ऑन दैट। और गेंद जब तक फील्ड हो, शॉट स्क्वायर लेग और शॉट मिड विकेट के बीच बल्लेबाज के पास समय था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और हरिकृष्णन की गेंद को ड्राइव कर दिया, ओवर पिच गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा। इट्स 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड फोर्थ ओवर हैज बीन केम टू इन फैक्ट फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, आई थिंक सो। स्टिल अ बॉल लेफ्ट, एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है और हरिकृष्णन इस ओवर में अंतिम बार अच्युतेश्वर के लिए गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चूंकि लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक और बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 4 रन यहां पर हरिकृष्णन ने प्रदान किए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा SAC Waves अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। और 2 ओवर का खेल बाकी, 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स। और जहां तक करारे स्ट्रोक्स का सवाल है, कम से कम 1 चौका या छक्का इस वक्त मैच को SAC Waves की ओर पलट सकता है, लेकिन इन हालातों में चौका या छक्का लगाना उतना आसान नहीं है। और देखना यह है कि इस 32 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बल्लेबाज कौन सी रणनीति बल्लेबाजी में यहां पर अपनाते हैं। तो 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फ्रेडविन यानी फ्रेडी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त सुनील 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद का उन्होंने अब तक सामना किया है और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर किया, अंतिम क्षण में बल्ले पर आने दिया, अंतिम क्षण में और गेंद को बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया
पॉइंट पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 17 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और फ्रेडविन हालांकि दौड़ कर आए लेकिन इस बीच बल्लेबाज तैयार नहीं थे। शायद मैदान के बाहर रास्ते पर गुजरती हुई गाड़ी का जो हेडलाइट है उसकी रोशनी उनके आंखों को चुभी थी इस वक्त, तो इस वजह से उन्होंने गेंदबाज को रोक लिया था गेंदबाजी करने से बल्लेबाज ने। और इस बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, इनटू द गैप। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हो गए और चौका यहां पर प्राप्त हो चुका है। गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ऊंची उछाल लेती हुई सीधे निकल गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। और इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लग चुका है अच्युतेश्वर के बल्ले से। और इन हालातों में जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, चौका या छक्का लगाना उतना आसान नहीं है क्योंकि हवा का रुख बिल्कुल नहीं के बराबर है। और यहाँ पर गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक था। और सबसे अहम बात यह है कि गेंद गैप पर टिप्पा खाई थी लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट नाउ। और अब 10 गेंदे बाकी है, रन से चाहिए 11। 11 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। और इस चौके की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा एसएसी वेव्स इस मैच में लगभग वापस आ चुका है। दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी विकेट स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद पुश किया कहना पड़ेगा। और अंतिम क्षण में गेंद जब तक फील्ड हो पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 10 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, फ्रेडी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा और गेंद इस वक्त जाकर टकरा चुकी है स्टंप्सों पर। और इस बार ये विकेट गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा था बल्लेबाज सुनील ने, लेकिन गेंद लगभग उनके शरीर के किसी अंग पर शायद पैर पर टकराने के बाद यहां पर टकरा चुकी है स्टंप्सों पर बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और निर्णायक मोड़ पर एक विकेट यहां पर गिर चुका है। 22 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित और गेंदे इस वक्त बाकी है 8 जबकि रन्स बनाने हैं 10। और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त आगमन होता हुआ सुदेश का, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फ्रेडी की गेंदों का। और यहां पर देखना यह है कि सुदेश फ्रेडी की गेंदों पर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, और कुछ हद तक इस वक्त बल्ले को उठाकर वो खड़े हुए सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और 1 रन इस बीच दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress. 7 balls to go and 9 more runs now they have to score for victory. What a fantastic match is now progressing here. फ्रेडी गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, अच्युतेश्वर बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सामना करने के लिए तैयार। गेंद को इस वक्त सफल होते हुए ऑन साइड पर उछाल दिया था, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर और थ्रो करे स्टंप सेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 24 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड 5 overs had been bowled. 8 to get from लास्ट ओवर नाउ। और देखना यह है कि मैच निर्धारित ओवर यहाँ पर कौन फेंकता है। बातचीत इस वक्त जारी है, दोनों बल्लेबाज भी इस वक्त बातचीत करते हुए। और जहां तक सवाल है मैच के विजय का, तो अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। करुणा सागर के हाथों में गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अच्युतेश्वर, जबकि सुदेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और इस वक्त करुणा सागर देखना यह है कि किस तरीके की गेंदबाजी इस मैच निर्धारित ओवर में वो करते हैं। और कुछ बातचीत टीम के अन्य खिलाड़ी से इस वक्त करते हुए फील्डिंग के सजावट के बारे में। और इस वक्त तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर
दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अगेन ड्राइव किया, स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े डेंजर रन की ओर, इस वक्त पहुंच नहीं पाए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। सीधा थ्रो पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया, इससे पहले कि बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण करे और सातवां विकेट यहां पर गिर चुका है। अब रन से चाहिए 7, गेंदे बाकी हैं 5। 7 to get now from 5 deliveries और अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। One shot in fact now declared it, yes। तो रन से कोई भी वहां पर नहीं जुड़ेगा, तो स्कोर इस वक्त वहीं पर रुक चुका है। 25 for the loss of 7 wickets. In fact, it's 7. In fact, it's a 24 the total, and 8 required in remaining 5 deliveries. और इस बीच गेंदबाज तैयार, फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर खेल दिया, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग पर, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड रन बट वोंट गेट इट, एंड इन फैक्ट वन ऑफ देम लॉस्ट हिज विकेट। 25 now for the loss of 8 wickets. Four balls remaining and 7 runs more now they have to score for victory. 6 for tie, 7 for win, and now just 4 balls left in their innings. और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज करुणा सागर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पर सिर्फ 2 विकेट सुरक्षित SAAC वेव्स के लिए। और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 विकेटों की मदद से इन 4 गेंदों में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। करुणा सागर इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ बातचीत करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 4 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए 7। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ 7 to get from 4 deliveries, और यहाँ पर डॉट गेंदों की सख्त दरकार यार टाइटंस के गेंदबाजों को, जबकि रनों की सख्त जरूरत इस वक्त SAC वेव्स के बल्लेबाजों को। सिर्फ 2 विकेटें सुरक्षित, और यहाँ पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है और एक बार फिर से खेल पुनरारंभ होता हुआ अंपायर्स अपने स्वस्थान पर यहाँ पर लौटते हुए। और तो अब गेंदबाज करुणा सागर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 7 to get from 4 deliveries। गेंदबाज की एक गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में, नॉन स्ट्राइकर पर खतरा हो सकता है, बैकअप नहीं, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल चुकी है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यहां पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। तो बाई के रूप में 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 for the loss of 8 wickets, and now 5 to get in remaining 3 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. और सिर्फ 2 विकेटें सुरक्षित, just they got 2 wickets in their hand। और सिराजुद्दीन इस वक्त सामना करते हुए करुणा सागर की गेंद का एक बार फिर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, अपील होती हुई कॉल बिहाइंड के लिए इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर दौड़ कर आए और अंतिम क्षण में यहां पर
देखना यह है कि रन वहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो यहां पर अंपायर के द्वारा कोई इशारा नहीं, बाई का इशारा अब करते हुए, और स्कोर अब बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। तो 2 गेंदे अब बाकी हैं और रन से चाहिए 4। निस्संदेह एक बेहतरीन मैच इस वक्त यहां पर खेला जाता हुआ, और दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और करुणा सागर फील्डिंग में जमावट करने के बाद एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बल्लेबाज के लिए, गेंद को इस वक्त चिप गया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 9 गिर चुका है। गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और भुगतान उन्हें करना पड़ा। और अब अंतिम गेंद बाकी और चौके की जरूरत अंतिम गेंद में। अंतिम विकेट भी इस वक्त उनकी बाकी यहां पर। 4 required in the last ball and last wicket in hand। और सिर्फ चौके या छक्के ही अब एसएसी को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। और करुणा सागर गेंदबाज, बल्लेबाज, स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त सिराजुद्दीन मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार। 4 required of last delivery and here he come, here we go, last ball coming up। इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके, और इसी के साथ AR Titans registered a thrilling victory by, in fact something happened and that's a no ball called by square leg umpire। तो यहां पर 1 रन जुड़ेगा और 1 गेंद अभी भी बाकी है। तो 3 रन यहां पर अब अंतिम गेंद पर बनाने हैं। तो एक खिलाड़ी ज्यादा, तो 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर होना जरूरी है और मैच के किसी भी मोड़ पर। यहां पर एक खिलाड़ी 20 गज के दायरे के कुछ बाहर था और स्क्वायर लेग अंपायर विवेक ने इस वक्त तुरंत भांप लिया कि सिर्फ 3 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से उन्होंने नो बॉल घोषित किया, यानी उम्मीदें अभी भी बरकरार है। 3 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल, 2 फॉर टाई, 3 फॉर विन और फ्री हिट गेंद। तो अंतिम गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज के लिए कोई खतरा नहीं। देखते हैं, ये भी गो, इस बार गेंद को ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंचती हुई, 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, इस भी तीनों स्टेप चुका चुके हैं और यहां पर ये विकेट गिर चुका है। So what a fantastic match is now came to an end. Just a single run victory for AR Titans and with that thrilling single run victory against SAC Waves, AR Titans back the complete points. So what a fantastic match is now ended. Absolutely fantastic match. And now next match will be the last match of the day. Will be played within just short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin right after the short break. And now it's time for break. Thank you.
So coming to the last match of the day number 1, US Strikers takes on Udupi Lions. After winning the toss, captain of Udupi Lions elected to field first, so that opening batters came into middle for AK Strikers. AS Strikers. So scorer is ready here. Everything is ready, so that the first over is going to start from the far end. So first delivery of the innings of the strikers, AS Strikers, and start with the delivery which is outside the line of off stump too far. So that wide call by umpire Rajaratna sir. So that first run coming up here for AS Strikers. One without loss of any wicket. This time he lofted down to deep long on. One bounce over the roof for 4 runs. Little bit short pitch delivery all the time in the world. The batter to swing his bat towards a deep long on boundary for a block on boundary. One bounce over the roof. So with that boundary there, Strikers, the total score now moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Again from the far end. Delivers. It looks to be that ball is outside the run of off stump. Try to push that one in the offside region. Missed it completely by the batter in the negation. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. The score remains on 5 without loss of any wicket. This time he lofted quite handsomely, and he got a placement, and it's the one of the spectators down a deep extra cover cast the ball, and now I want to wait for the umpire signal. And the fielder there, I think the extra cover, the spectators out here in the deep extra cover, he cast the ball. That means the wait for the third umpires, where he cast, I think. That is a 6, yes, exactly. The one spectator was sitting in the wall is cast the ball. So that umpire rightly so, that ball definitely going to land into that wall. With that 6 score now jumped into 11 on the board. Dinesh is in aggressive frame of mind. Beautifully bowled, absolutely perfect one. Excellent in-swing delivery, that one, absolutely. It was more than the batsman expecting. That much of turn is taken place in that over. Doesn't look like the fast bowler bowling that in-swing delivery, just like Muthaya Muralidharan bowls that up-spin delivery. That much of turn is taken that in that particular delivery. This time he fools that one, and the ball is landed safely. The short scholar fielder tried his level best to take that catch, but after one bounce he collected, and meanwhile the batter completed its single. So with that single, scoreboard moves on to 12 on the board without loss of an wicket. On the board. Umpire having some conversation with the bowler. One ball remaining in this over. Last and final delivery of this over. Bharat from the far end. Seeping in from the far end. Right arm over B balls. Again, the wicketkeeper fails to collect the ball, but no question of any run. The backstop fielder almost in a fine short man region. The fields the ball, good over, and a good over in fact for AS Strikers. They got 12 valuable runs without losing any wicket. A very good start given there by the opening batters. 12 without loss of any wicket. Time is exactly 11 past 40. You're watching the last match of the day number 1.
between Udupi Lions versus AF Strikers. Udupi Tigers, in fact, not Lions. The second over will going to start from the commentary box, and Shivaraj has got a ball in his hand. Dinesh got a bat in his hand. Definitely it's going to be a very good contest between one very good bowler versus a very good batter. Dinesh so far looking pretty good in this particular the match. In the previous over, he got some treatment from his bat. Shivaraj. Right arm over the wicket, very close to the umpire in the dedication. And he delivers outside the line of off stump, and Shivaraj missed it completely from his at bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. 12 without loss of any wicket. Shivaraj again, bowling away from us. Right arm over the wicket, he bowls. This time he pulls that one right in the gap towards the deep mid-wicket division. One bounce, two bounce over the row for 4 runs. Excellent placement here from Dinesh. Shuffled across the line of delivery before the bowler going to deliver that one. He almost moving towards the off stump, outside the line of off stump, and he exactly knows that there is no fielder in the mid wicket, and he got the placements right, and he got the boundary for that as well. 16 without loss of any wicket. Excellent stroke coming from the blade of Dinesh. Intention is very clear from AF Strikers. They wanted to capitalize this power play overs. Now one fielder now going back to deep mid wicket region. The fine leg coming inside the ring. There is a deep long on and one at deep mid wicket. Short score like short mid wicket. Short third man, short cover point, short extra cover mid off. 5 fielders in the off, 5 on the on, 4 in the on. Shivaraj back to his bowling mark. Right arm over the wicket, went for the switch hit, going over the top of the infield, not really getting that one middle of the bat, but he still managed to get a couple of runs here for switch hit. Before the fielder from the ring run back towards the deep cover point region. Ample time for the batters to complete that couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 18 on the board without loss of any wicket. Dinesh, you know exactly, this is the last out of the power play. You need to get some runs. As Shivaraj again delivers, beautifully bowled, extra bounce in the negation. Some part of the ground actually, when the ball is hitting that part, getting some extra bounce, creating the problem for the batters. And because of that extra bounce, Dinesh missed it completely from his bat. The score remains on 18 without loss of any wicket. Shivaraj bowls off, full that one. Big, I think, big appeal coming behind the stump, and even from the bowler. But rather than, I think, a little bit excitement behind the wicket. He is so confident, asking. Now I think umpire Rajaratna sir is telling that why you are asking me, because caught behind all is up to the main umpire to decide. And of course, the umpire Rajeshwar not responding for that appeal. You know exactly, maybe the ball is missed the bat completely off Dinesh Shivaraj. Right arm over the wicket, drives it on along the carpet down to deep long off region. There is a fieldsman in the deep long on. He's definitely going to cut it off, and with that the single scoreboard now moves on to 19 on the board without loss of any wicket after completion of over number 2. 9.5 runs per over, the run rate progressing here. Is a very good score in 2 overs. That means the AF Strikers, they got a very good start, promising start from these 2 opening batters are in the middle. Dinesh has got most of the strikes in this 2 overs of the power play. He's just dominating. So from the far end, no change in bowling. Bharat will going to continue. Now he's having some protection in the deep. Straight away one fielder at deep long on, one at a deep extra cover.
The one fielder going back to deep cover point region. Now mid-wicket fielder going back to deep mid-wicket. The fine leg inside the ring. There is no square leg as well. But now at the mid-wicket fielder coming a little bit fine. Almost towards a deep backward square leg. Between deep backward square leg and deep fine leg. Fine leg inside the ring. Short mid-wicket, short square leg. Short extra cover, short third man. The fielder is deviated for Dinesh Bharat. Right over the wicket, going for the big shot. Little bit outside the line of off stump, but they missed it completely, Dinesh. The good line just bowled away from the bat of Dinesh in the relegation by the bowler. Bharat once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, he bowls this time outside the line of off stump too far, so that wide call by umpire, rightly so. With the addition of that extra scoreboard, now moves on to 20 without loss of any wicket. 20 without loss of any wicket. Bharat maybe is looking for some delivery, which is he wanted to beat the bat of the batsman Dinesh outside the line of off stump, because he's a little bit shuffled across the line of the delivery. Maybe intention of Dinesh to get the big shot. This time he high up in the air. The fielder is coming underneath it, and he takes a comfortable catch in the straighter version. That was a straighted area. The fielder down at deep long on. Nagraj making no mistake at all. And the small cameo from Dinesh comes to an end. And he's back into pavilion after contributing some runs from his bat. They lost their first wicket at the score of 20. The Bharat has got a very, very important breakthrough in the over number third. They desperately required that wicket, because Dinesh is really batting dangerously in the middle. We're going very strong and strong in each and every over. After a long time, Sukesh back on strike. Didn't got that much of opportunity in the first 2 overs. Now he's back on strike, Sukesh. And Raghavendra is in non-strikers end. One more very good striker of the ball in the non-strikers end. Bharat delivers a lovely shot down to deep long off region, but there is a fielder in the deep long off, so that they have to get a single for that, not more than that. That single, Sukesh got a single, and scoreboard now moves on to 21 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Bharat once again back to his bowling mark. Raghavendra, wait and see how he will go into bat here. So far he is the only one player who got a highest individual score in this particular tournament, scored a 44 valuable runs. That was a quick fired 44. One of the best innings of this tournament of KVC Premier League 2022 Season 3. Bharat from the far end. Seaming in, right arm over the wicket, he delivers. Nicely cuts that one down to backward point region. They're running hard looking for the second. And they're coming back for the second as well. Excellent run immediately the wicket. And, immediately after the batter pushed that one right in the gap between backward point and cover point region. I quickly realized there is a possibility of couple of runs. Excellent placement there from Raghavendra. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 23 for the loss of 1 wicket. Bharat back to his bowling mark from the KVC Premier League advertisement board end. Delivers. Short pitch delivery far away down the leg stump. A wide call by umpire. One more addition for the total score, 24 now. And Bharat looking for some the bouncer for Raghavendra, but not well directed. Very short pitch delivery down the leg stump, outside the line of leg stump. Again, nicely driven, beautifully played there by Raghavendra. He's so good in that particular shot. Maybe he was shuffled across the line, but he's
very confident when he was drives the ball right from the middle of the bat. And that the wrist work comes into play to pick the single down to deep long on. With that single scoreboard moves on to 25 for the loss of 1 wicket. Bharat delivers. This time lofted that one right in the vacant area. Lovely placement. Beautiful shot indeed. Imperious extra cover drive there from Sukesh. Of course, not that much of the easy deliver to dispatch. That was a low full toss, but Sukesh have to deliver that one into the fence. The over number 3 completed after completion of over number 3. And the air strikers are striking the ball very well in these 3 overs. They got a 29 valuable runs and looking towards some big score, and wait and see, having all 9 wickets in hand, and what kind of target they will go into set here for Udupi Tigers. Meanwhile, changing commentary box as well, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 3 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ एएस स्ट्राइकर्स 29 रन जोड़ चुका है सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और उनकी पारी का चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। पहली गेंद गेंदबाज द्वारा लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। विकेट 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में, वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। और स्ट्राइक इस वक्त राघवेंद्र के पास है और भुवन इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राघवेंद्र के लिए एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी और एक बार फिर से अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन वो यहां पर प्रदान कर चुके हैं। तो स्कोर इस एक वाइड रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट 2 लगातार वाइड गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं भुवन और अभी भी अपनी सही गेंद की तलाश में अगली गेंद लेकर है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा। 3 लगातार वाइड और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इनफैक्ट। और फील्डिंग में उसी तरीके का क्षेत्र रक्षण दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघवेंद्र के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा। एक और वाइड, 4 लगातार वाइड, 4 कंसेक्यूटिव वाइड्स बाउल्ड बाय द बॉलर भुवन और 1 रन और जुड़ेंगे अतिरिक्त एक्स्ट्रास के खाते में और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम के दूसरे खिलाड़ी उनको कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी है और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और राघवेंद्र इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड नंबर 5 इन दिस ओवर। 34 सो स्लॉपी बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर। 5 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके इस ओवर में भुवन और अगर कोई भी गेंदबाज 5 लगातार वाइड अगर फेंकता है तो सहज रूप से बल्लेबाज का मनोबल वहां पर बढ़ जाता है। और यहां पर देखते हैं राघवेंद्र उनकी सही गेंदों पर क्या करते हैं। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बार सही गेंद को जीता। हालांकि बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया था इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में, गेंद ज्यादा उछाल लेते हुए और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 34 1 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाउंस लेते हुए गेंद को इस वक्त ढकेला था, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त सिली मिडाउन क्षेत्र पर जहां पर स्वयं गेंदबाज
भुवन न जाकर गेंद को फील्ड करते हुए और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो दो बेहतर गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं, 5 लगातार वाइड फेंकने के बाद गेंदबाज भुवन। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, स्टेप आउट करके आगे निकले थे जरूर राघवेंद्र आक्रामक स्ट्रोक लगाने के प्रयास में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले पर लेने में असफल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और धीरे धीरे अपने सही लय को, रिदम को प्राप्त करते हुए भुवन अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद चिप किया है इस वक्त राघवेंद्र ने और यहां पर मिड ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया है। और जैसे ही स्ट्रोक को राघवेंद्र ने खेला, हताश मनोभावना के साथ वो पेविलियन की ओर 2 कदम उन्होंने बढ़ाए जरूर, लेकिन तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि शायद कैच छूट भी सकता है, तो इस वजह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया रन के लिए। लेकिन इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और यहां पर बल्लेबाज राघवेंद्र की पारी समाप्त हो चुकी है। तो राघवेंद्र का बेशकीमती विकेट गिर चुका है और दूसरा विकेट 34 रनों पर खो चुका है इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और नए बल्लेबाज प्रद्युम्न का आगमन यहां पर होता हुआ सुकेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और भुवन इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को उन्होंने रोक लिया और इस बीच सिर्फ बाई का इशारा सही तरीके से अंपायर द्वारा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक लंबा ओवर भुवन का यहां पर प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा, वाइड नंबर 6 इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज भुवन और एक और रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में वो यहां पर प्रदान कर चुके हैं। 36 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स और भुवन इस बार ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 37 8 runs scored in this over in fact and 6 of them came in the face of wide। तो 8 रन 6 वाइड इस ओवर में फेंकने के बावजूद सिर्फ 8 रन इस ओवर में प्रदान किए भुवन ने और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs scored by एएस स्ट्राइकर्स। रात के 11:55 यहां पर बच चुके हैं और मैदान पर सन्नाटे भरा माहौल यहां पर छा चुका, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और मैदान के बाहर जो रास्ता है उस रास्ते पर सुबह और शाम के वक्त जितनी गाड़ियां गुजर रही थी उन गाड़ियों की संख्या अब काफी हद तक कम हो चुकी है और यहां पर इस मैदान पर इस श्रृंखला का केवाईसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत इस श्रृंखला का मैच नंबर 15 यहां पर खेला जाता हुआ और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश किया, शॉर्ट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका इस वक्त और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 38 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद लग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। सुकेश के बल्ले से ये छक्का इस वक्त लग चुका है। पोजीशन एक्सक्विजिट इस वक्त और मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंद को खेल दिया, इस वक्त उछाल दिया कहना पड़ेगा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 44 रनों पर। इट्स 44 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर अगली गेंद फुल टॉस, इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर और गेंदबाज दिनेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
9 गेंदें अब बाकी उनके पास में। और अंतिम गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई लेग कटर गेंद थी, वाइड की मांग जरूर की लेकिन इस वक्त अंपायर ने इसे नकार दिया। सही गेंद घोषित, सही निर्णय अंपायर द्वारा। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दिनेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए प्रद्युम्न सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया ऑफ द टोज लंगोन की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और इस ओवर में अंतिम बार दिनेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई जगह बनाते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया वाइड स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed and now after 5 overs they are looking in a commanding situation. 47 runs they scored for losing 2 wickets with a run rate of exactly 9.40 runs per over, and this is an absolutely a fantastic progressing year for them. अंतिम ओवर बाकी यहां पर और गेंदबाज इस बीच अंतिम ओवर प्रारंभ करते हुए नागराज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुकेश, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर करते हुए 13 रन अब तक वो बना चुके हैं। सिर्फ 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक बेहतरीन छक्का भी उन्होंने लगाया था पिछले ओवर में। और यहां पर नागराज की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर नागराज। इस बीच कुछ पिच का जो लाइन है नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो क्रीज है वो क्रीज जो कि मिट्टी से ढक चुकी थी और उसे इस वक्त उस पर गिरे मिट्टी को अपने जूतों से हटाने के बाद एक बार फिर से तैयार। ओवर की पहली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, मच स्ट्रेटर लाइन, केप्ट लो इन द लास्ट मोमेंट आफ्टर पिचिंग एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 47 रनों पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद इस बीच अपने रनअप को रोकते हुए, हालांकि वहां पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे और इस बीच वापस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और दाहिने हाथ ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद लगभग उनके शरीर उनके छाती पर टकराती हुई। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन यहां पर नहीं मिलेंगे। अंतिम ओवर प्रगति पर उनकी पारी में और एक बार फिर से रन अप में बाधा और अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज नागराज। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुकेश इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद नागराज की इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि पूरी तरह एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, पैर और बल्ले के बीच से निकली, चीरती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। M9 स्पोर्ट्स द्वारा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का YouTube पर और इस देर रात में भी एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो नागराज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद उछालना चाहा, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, रन इस वक्त नहीं मिलेगा और रनआउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहा था और कोशिश भी उन्हें करनी चाहिए क्योंकि उनकी पारी का अंतिम ओवर यहां पर प्रगति पर और ये विकेट यहां पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। प्रद्युम्न की पारी समाप्त और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज 94 नंबर की जर्सी पहने हुए और नागराज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद पैरों पर टकराई, गेंद को उछालना चाहा था चूंकि और
अंतिम गेंद बाकी, लास्ट बॉल। अगर अंतिम गेंद बाकी और इस अंतिम गेंद पर सलीम अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार श्रीमान इम्मू इनकी ओर से घोषित किया गया है। और इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन जमीन के सहारे एक्स्ट्रा कवर पर रहा है। और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो को रिसीव करने में ठीक तरह से असफल गेंदबाज है और 2 रनों के साथ द इनिंग्स इज अप। The stipulated overs are completed and they finished well with 49 for the loss of 3 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of exactly 54 Udupi Tigers. And Udupi Tigers के विजय का जहां तक सवाल है 50 रन ठीक उन्हें बनाने निर्धारित 6 ओवर में exactly 8.33 the required run rate for them। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने यहां पर उपस्थित होंगे। For over the required run rate for them, and we are just waiting for the openers of Udupi Tigers. So हेलो हेलो So still we are waiting for the openers of Udupi Tigers, and the match is now stopped for a while. तो 50 रनों का लक्ष्य इस वक्त ये स्ट्राइकर्स ने रखा है उडुपी टाइगर्स के सामने और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई कुछ बातचीत इस वक्त चलते हुए संगठक और अंपायर्स के बीच में। और जहाँ तक सवाल है आरंभिक बल्लेबाज का, तो
भुवन और शिवराज आरंभिक बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए और तो जहां तक सवाल है इस वक्त 50 रनों का और देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि उनकी पारी की यहां पर शुरुआत हो, माइक्रोफोन पर अब आगे का को देखाल सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद। Thank you very much, Gopi. So 50 is the target, and from the far end, the first ball right over the wicket, beautifully played that one, absolutely fantastic. Down to deep, extra cover boundary for 4 runs. That was the kind of start is required for Udupi Tigers because they're chasing 50 to win this match, and they needed such kind of start in the beginning. Short pitch delivery outside the run of off time, not really having ample pace in that ball, and it didn't got adequate field for that. Perfect punishment coming from the blade of the batter Bhuvan. Pradyum from the far end. Left arm balls a beautifully ball. That was a perfect line to ball. Almost forcing the batsman onto the back foot, Bhuvan. But we managed to pick the single. That's very important in cricket. When you're chasing a big total like 50 to win this match, you need to rotate the strike. And that was a good sensible batting here from Bhuvan after getting a boundary in the first delivery. And he picked up a single for that. So with that single, scoreboard was on to 5 on the board. Umpire not really happy with what the batters are doing here. It is not good to see that every time when strikes are rotated, they wanted to change the bat. Again, lovely delivery indeed, beautifully bowled, forcing the batsman again into the back foot. Beautifully bowled by Pradyumna. The discipline is so important, isn't it? When you're playing such a big tournament like KVC Premier League, a lot of hard work is done. Hard work did for this cricket tournament. That discipline is so important. Lovely shot. Look at that one. That was a lovely shot indeed. Can you believe this? How well he managed to deliver that one. Not that much of shot enough, but the batsman himself make that one shot by little bit moving back and lifting his front foot and just got the direction towards the deep backward square leg region for 4 runs. Lovely improvisation here from the batter. Again, nicely bowled and equally well played there by the batter. Again, he picked up a single down to short mid-off region. That was a really good start given by the 2 opening batters, Bhuvan as well as batter Shivaraj. Both the batters has got a potential of hitting some big shots as well, and have got a potential of playing a long innings because after they won the first 2 matches of the league, then he faced the 2 defeats, so that's very important here for Udupi Tigers to win this match. This time is almost far away outside the run of off stump in dedication. Of course, the far away outside the run of leg stump tried to make a little bit room to play the cut shot, but is going too much away from the outside the line of leg stump, and Pradyum bowled a very good line in the dedication, but it's a productive over. And after completion of over number first, chasing 50 to win this match, and they got exactly 10 runs without losing any wicket. So just coming back to the equation, we can see that 5 overs remaining, that means 30 balls remaining. They have to get another 40 runs to win this match. .40 required from 30. The match is definitely evenly poised. It's going to be anybody's game. So wait and see who will going to bowl that second over. So very important for AS strikers to get some wickets because they desperately required one breakthrough here. And seeing that both the batters are looking pretty good in the middle in the first over, and they brought Jitesh into attack now. Jitesh. Right arm over the wicket. Short pitch delivery. Fulls that one quite nicely. Again, there is no fielder in the square leg region. 1 bounce over the rough for 4 runs. Little margin for error, isn't it? When you are bowling in the power play overs, if you bowl that kind of short pitch delivery, I think definitely the batter will going to enjoy
And again, the Bhuvan Shivaraj, in fact, he pulls that one down to deep backward square leg region boundary for 4 runs. No protection is given for that short pitch delivery. This is so important when you are bowling the power play overs. You need to see where the fielder is situated. And as for the field, you need to bowl. But this time, short pitch delivery outside the line of leg stump. And definitely it's going to be a very free hit delivery for the batter. Right arm over the wicket. This time he lofted. He lofted high up in that. Middle fielders going back, and Raghavendra takes a very good catch. Maybe he's making it a little bit simple by going back and judging the catch very well. And the wicket of Bhuvan is back into pavilion. The much required Shivaraj, in fact, is back into pavilion, looking for the big shot. Of course, once it looks like when he's lofted that one, I thought it might be the stroke which is going over the top of infield. But as a fact that is mistimed that one. So that ball is ballooning high up in there. Enough time for Raghavendra to judge that one. Just going 2-3 steps back outside the ring, 20-yard circle. And he judged that one very well. Look at that one replay. Absolutely perfect position is taken. And the scoreboard now 14 for the loss of 1 wicket. Dinesh is the new batter. Just came into middle. One more very good striker of the ball for Udupi Tigers. But now Bhuvan is on strike. What a delivery. That was a fantastic one. The good comeback by the bowler. In that occasion, a sharp incoming delivery from the bowler, Gitesh. And the batsman managed to pick the single. Almost is saving his wicket more than he picked up a single. But along with that, he picked up a single for that. 15 for the loss of 1 wicket. Gitesh bowls. This I bowled him. Cleaned him up. Shuffled across the line of the delivery too much, Dinesh. He pays the penalty for that. And that was an outstanding bowling performance here from Gitesh. He picked up 2 valuable wickets in this over for AF Tigers. Really pay the penalty for that. Facing his first delivery, Dinesh. He shuffled across the line of the delivery too much. And that time I think premeditated, and Jitesh just observing the movement of the batters, and then he bowled a very good delivery almost in the middle stump. The wicket number 2 is back into pavilion. 15 for the loss of 2 wicket. Gitesh. So far it's a very good over indeed as far as the wicket is concerned. He picked up 2 valuable wickets. Right arm over the wicket. Bows. Oh, look at that delivery. Absolutely perfect one. Just like is a one from the over. The one bouncer of that over. Really, it was unplayable bouncer. It was surprising the new batter. Nagraj Bhatt is on strike. Facing next delivery. Oh, edging it down to just away from the wicketkeeper. And one more addition to total. So with addition of that single, scoreboard is 16 for the loss of 2 wicket. The better over after he got after he conceded boundary in the first delivery of the over. Then he bounced back very strongly with some very good line and length. He picked up 2 valuable wickets as well. So chasing 50 to win this match. And Udupi Tigers are struggling in the middle. 16 for the loss of 2 wicket. $16 for the loss of 2 wicket. That means that 34 more runs required for the victory. And 2 overs completed. And before the next over will go into commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone. Different experience with. Absolutely, Satish. There is a different experience without ground commentary. In fact, ओनली इन यूट्यूब वी आर गिविंग अ कमेंट्री. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त सिर्फ यूट्यूब पर इस वक्त कमेंट्री दिया जा रहा है. ग्राउंड कमेंट्री इस वक्त नहीं है क्योंकि वक्त इस वक्त 12 से ज़्यादा बीत चुका है. और यहाँ पर आज का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और 16 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. तो यहाँ पर एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी. 34 रन और बनाने हैं विजय के लिए. और गेंदबाज जब बाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद हल्के से कदमों के सहारे गेंद को इस वक्त खेल दिया. गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिलेगा इस वक्त. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाज इस वक्त
प्रद्युम्न गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और नागराज भट्ट ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। भुवन सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, थोड़ी सी मिसफील्ड है और जब तक गेंद को बैकअप होता बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी ऊंचा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ दूसरा रन यहाँ पर काफी तेजी के साथ दूसरा रन पूर्ण किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और ये गेंद इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ पर और इस बार मिसफील्ड बैकअप होता हुआ और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और एक बार फिर से गेंद दूसरे फील्डर के हाथों से भी छूटी और तीसरे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 15 6 overs. They scored 20 for the loss of 2 wicket for Udupi Tigers after completion of 3 overs. And now 3 overs remaining in their innings and 29 more runs they have to score for victory. And the asking run rate is now gone up to exactly 9.66 runs per over. और यहाँ पर रात के 12:20 बज चुके हैं और आज का खेल समाप्त होने में अभी भी 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और इस वक्त संघर्ष जारी है आज के इस अंतिम मैच में। एएस स्ट्राइकर्स और उडुपी टाइगर्स के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए एएस स्ट्राइकर्स ने 49 रन बनाए। 50 रन का लक्ष्य उन्होंने रखा 6 ओवर में और उस चुनौती को कबूल करते हुए, लक्ष्य का पीछा करते हुए अब उडुपी टाइगर्स 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनके पारी में। गेंदबाज राघवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, सामना इस वक्त करते हुए नागराज भट्ट और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त राघवेंद्र तैयार था। इन हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद, 17 गेंदें बाकी है, 29 रन चाहिए। 29 टू गेट फ्रॉम 17 डिलीवरीज। M9 स्पोर्ट्स द्वारा एक बेहतरीन लाइव कवरेज इस देर रात में भी दर्शक इस वक्त देखते हुए यूट्यूब पर और इस श्रृंखला का कुल मिलाकर 15वां मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर ऑन साइड पर गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 22 now for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. 16 balls remaining in their innings and 28 more runs now they have to score for victory. They badly require one or two big strokes at this stage to get back into this match. ये गेंद हवे में, विकेट कीपर नहीं यहाँ पर गेंद को लपक नहीं पाए। पहले प्रयत्न में गेंद छूटी, दूसरे प्रयत्न में भी उन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की लेकिन न गेंद को वो लपक नहीं पाया और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान के साथ 1 रन प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और राघवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, लगभग गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, चाहिए कुछ चौके और छक्के इस वक्त अपनी वापसी करने के लिए उडुपी टाइगर्स को इस मैच में। दाहिना तो पर द विकेट, राघवेंद्र की गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर, चूके गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राघवेंद्र और इस बीच बाई का इशारा हो चुका है अंपायर द्वारा। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और राघवेंद्र इस ओवर में अंतिम बार नागराज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी
करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद के लाइन से अपने शरीर को अलग करते हुए गेंद को सीधे छोड़ दिया बड़ी मुश्किल के साथ विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका है। 26-26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और राघवेंद्र एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, बिल्कुल सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था, अंतिम क्षण में भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई। और यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टंप्सों पर गेंद टकरा चुकी है। अंतिम क्षण में गेंद को उछालने के प्रयास में चूके थे और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे स्टंप्सों पर टकराई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नागराज की पारी समाप्त, 4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका। 4 overs completed, 26 for the loss of 3 wickets now. Nagaraj departs and now a testing time continuing here for the batsmen of Udupi Tigers. 24 to get in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 12 runs per over. देखते हैं इस बचे हुए अंतिम 2 ओवर जो आज के खेल में जो 2 ओवर बाकी है उन 2 ओवर में क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आज अंतिम बार मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंग्रेजी में सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So 24 required from 2 overs. That means 12 runs per over is the required run. That looks to be a difficult one here for Udupi Tigers. And the first ball, and again the batter not really getting that much of timing behind the stroke. Mistimed that one, Bhuvan, but managed to get the single for that. And with that single, scoreboard was on to 27 for the loss of a 3 wicket. 23 required for the victory. Adarsh is back on strike. Needed some the firework from the bat if they wanted to win the match. Otherwise, it's difficult for AS Strikers to win this match. And so far, I think AS Strikers did a very good job in this particular match against a very potential the teams, which is Udupi Tigers. So that here is up from the far end, bowler Dinesh right arm over the wicket balls to Adarsh, lofted that one, just like I'm mentioning about the firework required in the late night. And here you go, the firework. And a perfect treatment for the delivery, which is bowled very short pitch. And Adarsh, even there's a new batters came into middle, but certainly has to say thank you very much for the bowler for that short pitch delivery. And because of that 6, they're strongly back into this game. 33 now for the loss of a 3 wicket. Again, this time one more. This is a better than the previous one. Looks like the ball is sailing over and over that mid-wicket boundary for a 6. The back-to-back 2 sixes. What a great comeback. Absolutely. Look at that one in replay. The flow of the bat. Look at that one. Absolutely magnificent, isn't it? That ball is came. That stroke is came from the right from the middle of the bat of Adarsh. Just 2 deliveries faced, and he changed the complexion of this match. 12 runs in just 2 deliveries, and it takes a match away from the opposition. 39 for the loss of 3 wicket. Now 11 runs required for the victory. He's in a hurry. Maybe the batter is in a sleepy mode. He want to go to the bed very early by finishing the match. Even we want to see that. Need to go for the bed very early. And here is in a firework actually is continue here in this particular over. Right arm over the wicket delivers. That was a better line. That was a better line. That was needed in the previous 2 deliveries, which is bowled a short pitch one. This time he quickly realizing that he cannot bowl that the delivery, which is a very fuller length one. Difficult and easy for the batter to pick that the line and length. Now he bowls outside the line of off stump again. Lovely delivery. Good comeback. The very good comeback there by Dinesh in the relegation. After that 2 sixes, then he bowled 2 very good deliveries followed after that. Now still they have to get another 11 runs to win this match. 13 balls remaining. Dinesh from the far end, right arm over the wicket. This time he chipped that one, but not enough power behind the start. Dropped by the fielder in the deep mid wicket. They're going for the second. Excellent running bit to the home. My God. Adarsh thought that the throw is coming to his end. That's why he's just desperately wanted to complete that single by doing that. Maybe he's just lost his balance
but he got 2 valuable runs for his team. It is an outstanding over here for Udupi. They got the runs what they really wanted in this particular over. So after completion of over number 5, little bit correction, the 41 for the loss of 3 wickets. That means the last over remaining, 9 runs required for the victory. The match is definitely going to be very interesting. The kind of the match which is required in the late night, just like my friend Gopi is mentioning about, absolutely it's a pin drop silent here, but still we can see there's some number of crowds enjoying the game of cricket left of our commentary box. Some the spectators, cricket lovers watching by sitting inside the car, putting their AC on, enjoying the game of cricket. And now it's going to be very interesting in this final over. 9 to get for Udupi Tigers. The Udupi Tigers started to roar in the previous over, and especially in form of one of the dangerous tiger in the middle. Adarsh is in non-striker's end, but he desperately wanted to in the striker's end. But Ashit will go into ball that very important over. 9 required for the victory. Right arm over the wicket, lofted high up in there. I don't think we'll go to get the distance, but he definitely going to get the fielder at a deep long off region. A very good start from Ashit. Picked up a wicket in the first delivery. Now 9 required from 5 balls, but very interesting to see that Adarsh is back on strike. Look at that one in replay, not really getting that much of this distance what he wanted to do. Maybe he's not really getting the timing behind that lofted stroke, because Ashit the bowls a very slower one. Maybe he's got a little bit run up, but he bowls a very slower one. That definitely going to confuse the batsman. Now 9 required from 5 balls. The danger batter is on strike. Outside the run of off stump, and a lovely judgment there by the batter in the negation. They maybe wanted to disturb the line and length of the bowler by moving here and there, and that means Ashit just lost his concentration over the line. Bowled outside the line of off stump too far. A wide call by umpire. 8 required from 5 balls. Ashit, right arm round the wicket. Disam across the line of the delivery, swinging that one right towards a wideish long on region, looking for the swing. Pradyumna there in the deep mid wicket, throws the ball. Wicket keeper missed the ball completely. Definite chance of run out. Definite chance of run out if the wicket keeper able to collect the ball. Possibility of making a run out, but they got a couple of runs now. 6 required. Now 4 deliveries remaining. Others still there in the middle. Is the only one hope of winning this match for his team, Udupi Tigers. Is batting on well made 16 runs in just 6 deliveries. And that was really the match winning innings if he may able to finish the match for his team. Ashit, beautifully bowled. Perfect one. Absolutely good delivery in this position. That was really not that much of shot enough for the any kind of batter to hit the full shot. Extra bounce as well for Ashit. The much required dotted delivery. Now 3 balls remaining. 6 runs required for the victory. That means each and every ball required couple of runs. 5 for the tie. Tie will going to share the points, both the teams. But both the teams doesn't want to share the points. They wanted the full 2 points if he wanted to remain in the points table in the competition. Again, one more dotted delivery appealed for something, but nothing has happened here. Now 2 balls remaining. 6 runs required for the victory. All in sudden we can see that the batsman started to feel the pressure, because now it's a do or die situation. That is the old slogan, but the new slogan is do before die. He wanted to do before die. That what the batter wanted to do in this remaining 2 deliveries. Adarsh. Now it's going to be a very decided delivery. Ashit bowling away from us. Right arm round the wicket. Balls this time. He hits that one. But fielder than the deep backward square leg. They're looking for the second. In comes the throw from the deeper, and desperately wanted to complete that couple, and he made it. Now it's so interesting. Scoreboard is 46. That means 4 runs required for the victory in the final delivery. The final delivery of the day number 1. Final delivery of the day number 1 and the decidal delivery of this match. Others
desperately wanted a boundary, and Ashit desperately wanted one good delivery. Wait and see who will going to win this last match of the day. Will it going to be Ashit? Will it going to be Adarsh? Both the players has got a chance to become a hero. This time, lovely delivery, right on the block hold. And looking for the second. In comes the throw from the deep. Overthrow comes up at 2 runs. The low going for the third as well. Chance of run out. Missed it and it's gone. Just a single run victory. Can you imagine this? They're trying for the third. At least they wanted to tie the match. But unfortunately, look at that one effort from the others diving to his crease. But still is a shot. And run out taken place. Absolutely a fantastic finish for the day number 1. And the thrilling victory here for AS Tigers. The thrilling victory. Absolutely thrilling victory. And what a fantastic innings from Adarsh. But still, this was not managed to take his team towards the target. Just a single run short of the total. They lost the match by a single run. Thank you very much, everyone. And that's it for the day number 1 of this prestigious KVC Premier League 2022. And we'll take the break here. And we'll come back tomorrow exactly at 7:30 a.m. in the morning. The final and decider day of cricket. KVC Premier League 2022. Till then, we are saying goodbye from commentary box. Myself, Satish Salian in English, Mr. Gopi in Hindi. Would like to say the goodbye and it's a good night. Sweet dreams. Thank you very much.